Hello, welcome everybody. Welcome to this session. Welcome to JAIIB CIB Prep Official. I hope you can hear me perfectly. Hello, good evening. Can you hear me? Hello, welcome everybody. Welcome to this session. So today we'll be dealing with Module D again. So we are doing BRBL Module D. I'm Advocate Devshree Dua. This is session 2. This is Module D Part 2. So today we'll be dealing with three acts. First is Sales of Goods Act, the Indian Partnership Act, and the Companies Act. So what is sales? Sales means transfer of ownership immediately. What is agreement to sell? Agreement to sell is when we transfer the ownership at a future time or on a fulfillment of a condition. Suppose you go and you want to buy a car, right? You ask the car company that I want to buy the car. The car company says ki next month on the 5th of December, please come and take the car, make the payment and you can take the car. So in the future time, after making the payment, I'll get the car. Okay. So ownership will be transferred to me on 5th of December, that is in future, and on fulfillment of the condition, that is I have to make the payment to the car company. So this is agreement to sell. Whereas in sale, we transfer the ownership immediately. That is, जिस समय मैंने पैसे दिए उसी समय मेरे को सामान मिल गया. मैंने आपके पास आई और I gave you 100 rupees and said give me 1 kg of flour. You gave me the flour and that is it. The sale is done. आपने मुझे फ्लावर दिया, मैंने आपको पैसे दिया, ट्रांसफर. दैट फ्लावर बिलोंग्स टू मी नाउ. ठीक है. If we breach the condition of sale, so on breach of sale, the seller can sue for price. If I do not make the payment to you, you can sue me for the price. But on breach of agreement to sell, seller can sue me for damages. मैं कार कंपनी के पास गई, उन्होंने कहा मैं कार मंगा दूंगी मैम, आप 5th of December को ले लेना. मैं 5th of December को नहीं गई, मैं 10th of December को भी नहीं गई. Here the seller can sue me for damages कि आपका काम था कार लेके जाना, मैंने अपने पास रखी हुई है, the car is taking a lot of place of mine, या मुझे गैराज का रेंट देना पड़ रहा है for you because of you. Here the seller can sue for damages. सेल्स ऑफ गुड्स में हम सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डील करते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं. सो वी ओनली डील इन मूवेबल प्रॉपर्टी इन अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. Sales of Goods Act. ओके. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील करता है. सो आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ स्लाइड्स हियर. प्लीज गो अहेड, यू कैन रीड इट इन योर ओन टाइम. ठीक है. प्रॉपर उसमें एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, कंडीशन एंड वारंटी, एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड. You can download our app and download this PDF from that app. ठीक है, from our app. So आप बस एक पॉइंट में एंड पे समझना ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज कंडीशन एंड वारंटी. व्हाट इज कंडीशन एंड वारंटी? सो दिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 11 to 17 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. तो कंडीशन क्या होता है? कंडीशन एक एसेंशियल होता है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट. The main purpose of the contract is the condition, whereas the collateral to the contract is the warranty. If we breach the condition, the buyer can repudiate the contract and plus ask for damages. Whereas if you breach the warranty, you will be only liable for damages. Let's understand this with an example. So आप एक कार खरीदने गए, ठीक है. अब A buys a car from, let's understand condition first, ठीक है. A buys a car from a dealer. She says, I want a new car
model of 2025. The dealer delivers a 2019 used car. Why is this a condition? Because specifically A ने बोला कि मुझे 2025 का न्यू कार चाहिए, न्यू कार चाहिए of 2025. The model should be of 2025. But the dealer, he delivers a model of 2019 and a used car. This is condition क्योंकि आपने essential बताया कि मेरे को जो कार चाहिए था वो न्यू ही चाहिए. Why is this a condition? The model year and the new condition are essential to the contract. The main purpose of buying the car is defeated. ठीक है, legal consequences is A can reject the car, repudiate the contract and claim refund plus damages. This shows breach of condition. Next is warranty, a collateral term. A buys the same car and seller promises the car has a new music system. जो भी इसमें कार में है म्यूजिक सिस्टम इज द न्यू वन कि आपको ऐसे म्यूजिक सिस्टम ना कहीं और मिलेगा नहीं. द कार अदरवाइज मेट ऑल एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स कि वो 2025 का मॉडल भी है, न्यू भी है, बट द म्यूजिक सिस्टम दैट वाज प्रॉमिस्ड कि ये न्यू है इज नॉट न्यू, रादर इट इज एन ओल्ड म्यूजिक सिस्टम. वाई इज दिस वारंटी? हम इसे क्यों वारंटी मान रहे हैं? Because the main purpose of the contract was buying of the car. A new 2025 model car is not defeated. It is secondary collateral. The music system is secondary. It is not an important part to the contract. Music system खराब हो, पुराना हो, खराब है तो चेंज करना पड़ेगा obviously, पुराना है तो भी चेंज करना पड़ेगा, but it cannot make you repudiate the contract. आप इसके बेसिस पे entire कार को वापस नहीं कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हो. All you can claim is the damages or replacement of the music system. This shows breach of warranty. So under collateral, under this condition, we say कि जो important terms and conditions है वो fulfill होने चाहिए. अगर आप important terms नहीं मान रहे हो, that will be treated as breach of condition. Whereas in warranty, we are there are some things that is not an essential to the contract and उनका breach हो रहा है, then you can ask for damages. Okay. So this is a difference between condition and warranty because यहाँ से एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा. ठीक है, बाकी other things you can read, you can download the PDF from our app and you can read the whole content. I have prepared the content, just आप जाएं and पढ़ सकते हैं. Let's start with the MCQs. Which of the following statement correctly relate to the definition and provisions under the Sales of Goods Act? The Sales of Goods Act 1930 governs both immovable and movable property transaction across India. Are we talking about both movable and immovable property, or are we just talking about movable property under SOGA? A document of title to goods include instruments like a bill of lading, a railway receipt, that can be transferred to receive goods. Third is future goods. Future goods refer to goods that are identified and agreed upon at the time of contract of sale. वो goods जो identify कर सकते हैं, future में जो goods बनने वाले हैं उसको हम at the time of sale, contract of sale जब हो रहा है तब उसे identify कर सकते हैं. So what will be the answer for question number 1? Answer for question number 1, everybody. So we have 3 types of goods. Past, present, future. ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इसमें से जो फ्यूचर गुड्स है ये कह रहा है कि दीज आर द गुड्स दैट आर आइडेंटिफाइबल एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट.
सी फ्यूचर गुड्स है जो गुड्स फ्यूचर में बनेंगे, ना आप उनको पहचान सकते हो ना आप उनको जान सकते हो, ठीक है. मेकिंग 3 एज इनकरेक्ट. So if you go by the rule of elimination, 3 is an option that is available in A, B and D. But we'll see the first statement as well and the second statement too. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जैसे मैंने क्लास स्टार्टिंग में बताया था कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील करता है. मेकिंग वन एज इनकरेक्ट एज वेल. तो वन भी गलत है एंड थर्ड भी गलत है. लेट्स सी सेकंड स्टेटमेंट नंबर 2. डॉक्यूमेंट of title to goods includes instruments like bill of lading and railway receipts that can be transferred to receive goods. Yes, that is what document of title to goods are. Option C is the correct answer. The Sales of Goods Act deals with movable property only. A document to title of good includes items like bill of lading, railway receipt, dock warrants, etc. They are used in the ordinary course of business as proof of possession or control and can be transferred to take delivery of goods. Specific goods. The statement describes specific goods and not future goods. Future goods are those that are not yet in existence at the time of the contract but are to be manufactured, produced, or acquired by the seller. Question number 2, everybody. Which of the following statement correctly relates to the definition and provisions of Sales of Goods Act 1930? A mercantile agent has authority only to sell goods but not to raise money against them. The mercantile agent सिर्फ goods को बेच सकता है, उनके अगेंस्ट मनी नहीं रेज कर सकता. दैट इज he cannot pledge the goods. We have talked about this statement when we were doing contract Indian Contract Act. उसमें मैंने आपको बताया था क्या mercantile agent जो होता है वो goods को pledge कर सकता है कि नहीं कर सकता. Growing crops agreed to be severed before sale are considered goods under the act. Growing crops को हम goods कहते हैं. तो goods की definition कहते हैं goods is equals to movable goods. Goods को हम movable goods कहते हैं, ठीक है. Goods aka movable goods means anything. Okay. हमारे को ना इमूवेबल गुड्स की डेफिनेशन दे रखी है. इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी है रादर. Immovable property means any property that is attached to the earth or embedded in the earth except growing crops, standing timber, and grass. ठीक है. Immovable property कहते हैं anything that is attached or embedded or so embedded to the things attached to the earth is known as movable goods. Immovable goods की immovable property की हमारे को definition दे रखी है anything that is attached to the earth, embedded to the earth, or things attached or so embedded to the things attached are immovable properties. बट इसमें क्या नहीं आएगा? ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं आएगा, स्टैंडिंग टिम्बर नहीं आएगा और ग्रास नहीं आएगा. तो ग्रोइंग क्रॉप्स भी अर्थ से जुड़ा हुआ है, टिम्बर भी अर्थ से जुड़ा हुआ है और ग्रास भी अर्थ से जुड़ा हुआ है. वाई आर दे नॉट कंसिडर्ड एज मूवेबल प्रॉपर्टी? बिकॉज वी सेवर देम बिफोर यूजिंग देम. हम इसको अर्थ से अलग करते हैं बिफोर यूजिंग देम. क्रॉप्स को हमेशा काट के खाया जाता है, टिम्बर को हमेशा काट के बेचा जाता है, और grass is meant to be cut down, right? That is why these are not immovable property, so we consider them as movable ones. तो growing crops को goods की definition में लेके आते हैं, making B as correct. Mercantile agent has broad authority to sell
consign for sale, buy or raise money using goods as security. So the statement is incomplete and misleading. Growing crops and grass, if agreed to be severed before sale, are included in the definition of goods under the Act. This makes them part of movable property. Which of the following statement related to the contract of sale of goods are correct? Contract of sale के बारे में पूछ रहे हैं. A contract where goods are exchanged for other goods without money consideration is covered under Sales of Goods Act. एक गुड्स दिया और दूसरे गुड्स ले लिए और पैसे नहीं दिया, दैट इज बार्टर सिस्टम करा. क्या बार्टर सिस्टम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इंक्लूडेड है? The Sales of Goods Act applies to sale of immovable property like land and buildings. So we have just studied कि Sales of Goods Act सिर्फ और सिर्फ movable property पे लगता है. The contract of sale can be formed even through implied conduct and need not necessarily be in writing unless otherwise required by the law. See, आप सामान खरीदने जा रहे हो डेली बेसिस पे, राइट? आप एक स्टोर पे गए जहाँ पे यू वांटेड टू बाय राइस एंड फ्लावर एंड एवरीथिंग फॉर योर होम नीड्स. आप क्या वहाँ पे जाके रोज कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में करते हो? नहीं. आप सिर्फ जाते हो, यू से यू वांट राइस, यू वांट फ्लावर, वट एवर थिंग्स यू वांट, यू गो, यू पे फॉर द अमाउंट एंड यू टेक द मनी, यू टेक द गुड्स. Or you, if you have some sort of arrangement, you tell them to write that down and take the goods, right? You do not require everything to be in writing. So the contract of sale can be formed even through implied conduct and need not necessarily be in writing unless required by the law. But agar the law says that you need this to be in writing, you make that in writing, right? So making statement number 3 correct. स्टेटमेंट नंबर 2 हमने पढ़ लिया कि इनकरेक्ट है, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डील करता है. सो मेकिंग 2 एज इनकरेक्ट. अब हम बाय द रूल ऑफ एलिमिनेशन चले तो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एलिमिनेटिंग ऑल द 3 एंड मेकिंग ए इज द करेक्ट आंसर. Let's talk about the barter system. Sales of Goods Act does not cover barter transaction. Goods exchanged for goods. It only governs contract where the consideration is money. जब आप नोट्स देखेंगे उसमें मैंने स्पेसिफिकली बात लिखी हुई है कि बार्टर सिस्टम नहीं कवर्ड होता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर. पैसे दो, सामान ले लो, दैट इज व्हाट इज कवर्ड अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. Which of the following statement related to contract of sale of goods are correct? A sale always requires two parties, a buyer and a seller, making it a bilateral agreement. कि एक सेलर होगा, एक बायर होगा, तो कम से कम दो पार्टीज चाहिए, राइट? हमेशा दो पार्टीज तो हमें चाहिए ही चाहिए. A contract of sale may involve immediate delivery and payment or delivery in installment or postponement of either. कि या तो आप सामान अभी दे दो, पैसे ले लो, सामान दे दो, या फिर आज मैं आपको पैसे दे के जा रही हूँ, प्लीज़ कल मेरे घर आप 5 kgs फ्लावर भेज देना, ठीक है? या फिर आप जब मेरे को 5 kgs फ्लावर भेज दोगे कल, आपको मैं पेमेंट कर दूंगी. There are 3 situations. Either I make the payment and take the goods immediately, or I can pay for the goods and take the delivery on the later time, or we just can agree for the same कि आप कल मेरे घर सामान भेज देना, मैं आपको पैसे दे दूंगी. तो we can postpone both of them as well. ठीक है? तो और इंस्टॉलमेंट में कि भैया 500 रुपये आज रख लो, 500 कल दे दूंगी. ठीक है? सो पेमेंट और डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट्स. आइदर गिव मी 10 kgs फ्लावर राइट नाउ, गिव मी द रेस्ट 10 नेक्स्ट डे. ठीक है? दिस कैन बी डन. सो सेल्स ऑफ गुड्स में सब कुछ इन्वॉल्व होता है, दैट इज इमीडिएट भी, इंस्टॉलमेंट पे भी एंड पोस्टपोनमेंट में भी. मेकिंग बोथ दिस स्टेटमेंट एज करेक्ट. Sale is bilateral contract. It involves two distinct party, a seller and a buyer. एक सामान देगा, एक सामान खरीदेगा. Which of the following statement correctly describes the concept and distinction between sale and agreement to sell under the sales of goods framework? In a sale, the risk of goods lies with the seller until delivery, even if ownership has passed. In an agreement to sell, ownership is transferred immediately, but delivery may happen later.
A contract where goods are to be transferred at a future date and subject to condition is an agreement to sell. Which statement is correct according to you? Sale में goods lies with the seller until delivery. So the risk is also with the person, even if the ownership has passed. The risk of the goods lies with the seller until delivery, even if ownership has passed. I came to your shop. I asked to you, कि give me 5 kgs of flour. This is the payment. My son will come and pick the rice up. Okay? The ownership has been transferred. I have paid the amount to you. You have sold the rice to me. You have sold the goods to me. The rice is at your place. Now, do you have the responsibility for those rice? No, you do not, because ownership has been passed to me, making the risk on me, whether it is in your possession, but the risk is on me. But in agreement to sell, ownership is the when we talk about agreement to sell, does the ownership transfer immediately? But the delivery may happen on the later, in the later, on the late in the later time, later in time. No, the ownership and the delivery both are transferred on a later time in the future time when or on a fulfillment of a condition. Okay, so what should be the answer? C is the correct answer. Where is it? B written. C. C is the correct answer. Like, in sale, the risk lies with the buyer, not the seller, once the ownership has passed, even if delivery hasn't occurred. This is a key distinction feature between sale and agreement to sell. In an agreement to sell, ownership does not pass immediately. It transfers at a future time upon fulfillment of certain conditions, making this statement incorrect. A contract, if B is answer, sorry. B में ही है third, yes. A contract in which the transfer of a property in goods is to happen in a future or is subject to condition is indeed termed as agreement to sell. This is the fundamental definition. Which of the following statement correctly describes the concept and distinction between sale and agreement to sell under the sales of goods framework? तो सेल और अग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस क्या है? A buyer acquires good title even if the seller obtains possession under a voidable contract due to coercion or fraud, provided that the contract was signed by the buyer purchased in good faith. सेलर ने जो सामान है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आगे ऑब्टेन किया है, पोजेशन लिया है, एंड द सेलर एंड द बायर्स कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बिकॉज जो बायर ने सामान खरीदा है, पहले तो बायर ने साइन नहीं करा कॉन्ट्रैक्ट, एंड बायर ने सामान खरीदा है वो गुड फेथ में सामान खरीदा है. इफ एन अग्रीमेंट टू सेल In an agreement to sell, if the seller fails to deliver, the buyer can only claim damages, not specific performance. बायर सिर्फ डैमेजेस मांग सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकता. आप गए कार वाले पर्सन के पास, वो डिलीवरी नहीं कर पा रहा है, वो कह रहा है कि आज मैम 5th है, 5th दिसंबर को मैं कार लेने गई, 5th दिसंबर को कार आई नहीं मेरे शोरूम में. ठीक है, यहाँ पे क्या बायर कहेगा कि नहीं आज ही कार लेके आओ? दिस कैन नॉट बी सेड. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांगी जा सकती. आप डैमेजेस मांग सकते हो क्योंकि आपको आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको 5th को नेसेसरी थी कि आपको कार डिलीवर हो जाए बट नहीं हो पा रही है. हेयर यू कैन नॉट आस्क द सेलर कि प्लीज़ आज ही परफॉर्मेंस होनी चाहिए, अभी डिलीवरी होनी चाहिए. दैट इज़ नॉट अलाउड. ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर?
Both the statements are correct. C is the correct answer. If the seller obtains goods under the voidable contract and the contract has not been rescinded, a bona fide buyer without notice acquires good title. This rules protect good faith buyers in such transaction. हर क्वेश्चन में जहाँ पे भी आपको गुड फेथ मेंशन करा जाएगा वहां पे द स्टेटमेंट विल बी करेक्ट. दिस इज व्हाट इज द रूल कि आपने जब भी काम करा ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करा है, गुड फेथ में करा है, आपकी ना द स्टेटमेंट विल नॉट बी करेक्ट बट द एक्ट ऑफ द पर्सन विल बी करेक्ट. बिकॉज आप गुड फेथ में काम कर रहे हो, किसी को धोखे देने के इंटेंशन से काम नहीं कर रहे हो, सो द योर एक्ट इज करेक्ट. In an agreement to sell, since the sale is not conducted, the buyer can only claim damages if the seller fails to deliver. They cannot demand delivery or specific performance as ownership hasn't passed yet. Which of the following statement correctly describes the legal distinction between condition and warranty in a contract of sale? A breach of condition gives the aggrieved party the right to repudiate the entire contract. कंडीशन में क्या आप रेपुडिएट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को? ब्रीच ऑफ वारंटी में अलाउज द बायर टू क्लेम डैमेजेस बट नॉट रिजेक्ट द गुड्स. द टर्म a term initially classified as warranty can never be treated as condition even if it forms the essence of the contract. वारंटी को कभी भी हम कंडीशन की तरह नहीं मान सकते इवन इफ इट फॉर्म्स द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि इट इज एसेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू बी परफॉर्म. नाउ द वारंटी कैन नॉट बी, जो इनिशियली नॉट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट, eventually became essential to the contract, but it still cannot be treated as a condition. Can this be allowed? Answer please. See, third statement by the reading of it is incorrect, right? Even if parties label a stipulation as warranty, it may be treated as condition if it is essential to the contract. वारंटी में हम सिर्फ डैमेजेस मांग सकते हैं, कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट भी किया जा सकता है. Which of the following statement correctly describes the legal distinction between condition and warranty in contract of sale? If a buyer has accepted goods, they may only treat breach of condition as breach of warranty unless otherwise agreed. The classification of a stipulation as condition or warranty depends solely on how the parties have labeled it in the contract. कि क्या कंडीशन है, क्या वारंटी है, वो डिपेंड करेगा कि पार्टीज ने उनको क्या बोला कि दिस इज कंडीशन फॉर मी, दिस इज वारंटी फॉर मी. दिस इज लाइक दे आर सेइंग दिस सोली डिपेंड्स कि पार्टीज ने कैसे बोला है, कि उनके लिए क्या कंडीशन है और उनके लिए क्या वारंटी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये बात. सी, आप सिर्फ और सिर्फ की पार्टीज की लेबल पे नहीं जा सकते, ठीक है? एंड इफ द बायर हैज एक्सेप्टेड गुड्स दे मस्ट ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी. आप 2019 का मॉडल ले गए हो घर पे अग्री करके कि चलो ठीक है कोई नहीं दे दो, क्या आप अब गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर पाएंगे? नहीं, बिकॉज आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, आपने जो एक्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया है. अब आप इस सिचुएशन में डैमेजेस मांग सकते हैं बट पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकते. Once the buyer accepts goods, they loses the right to treat it as breach of condition as a ground of repudiation unless specifically agreed. The classification depends on the nature and the sense of the stipulation, not just not just the label used by the parties. Which of the following are recognized as implied conditions in a contract of sale under the Sales of Goods Act? That the seller has the right to sell the goods, that the goods shall correspond with the description in case of sales by description, that the goods shall serve any purpose for which the buyer assumes it would be fit even without informing the seller.
देखो, मैं आपके पास आई, मैंने कहा मैम मुझे ना एक ऐसा गुड चाहिए जिसमें एक्स भी हो पाए, वाई भी हो पाए और जेड भी हो पाए. आई हैव गिवन यू अ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन एंड हेयर यू यूज योर जजमेंट बिकॉज आप सामान को बेचते हैं एंड यू गिव मी द गुड्स कि मैम आपके जो जो रिक्वायरमेंट्स है ना ये सब इस गुड के साथ फुलफिल हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे इसे इम्प्लाइड कंडीशन कहेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बायर सेलर को कि मुझे क्या क्या नीड है, किस काम के लिए स्पेसिफिकली मैं सामान खरीद रही हूँ. ठीक है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन क्या होता है, मैंने आपको डिस्क्राइब करा दीज आर द गुड्स एंड जब मैं आपको सामान बेच रही हूँ तो वो जो डिस्क्रिप्शन है वो मैच करना चाहिए. अगर सेलर ने नहीं बताया है, सेलर को नहीं बताया है बायर ने कि उसको किस पर्पस के लिए सामान चाहिए और बायर अज्यूम कर रहा है कि हो सकता है ये जो काम ये गुड्स है ना ये काम कर देगा, assume it would be fed even without informing the seller, will we consider it as implied condition. आपने सेलर को नहीं बताया आपको गुड्स क्यों चाहिए, आपने assume कर लिया कि मेरे को जो ये गुड्स है ना ये इस काम कर देंगे. ठीक है, मेरे लिए ये गुड सफिशिएंट है, दिस इज व्हाट आई वांट एंड दिस इज व्हाट दीज गुड्स विल डू and you have not informed the seller do not know why you need the goods for. Here there is no implied condition. ठीक है, making third as incorrect, 1 and 2 are correct. The buyer must disclose the purpose to rely on seller's skill for the implied condition of fitness to apply. In sales by description, goods must match the description. There is an implied condition as to seller's title. He must have the right to sell. Which of the following are recognized as implied condition in contract of sale under the Sales of Goods Act? That in case of sale by sample, the bulk shall correspond by sample in quality. आपने मुझे पर्टिकुलर क्वालिटी के राइस दिया, ऑर्गेनिक राइस दिया एज सैम्पल. जब आप मुझे बल्क में वो सामान दे रहे हो तो वो भी वही क्वालिटी की होनी चाहिए जो आपने मुझे सैम्पल दिया था. यू सेड these are organic rice, I bought them as a sample from you when I put an order with you to buy organic rice and you give me simple rice. That is wrong. जो चीज़ आपने दिखाई है वैसे ही जो बल्क क्वांटिटी होनी चाहिए वो मैच करनी चाहिए. That the buyer shall enjoy quiet possession of the goods. बायर के पास राइट है possession of the goods को प्रॉपरली किसी की छेड़छाड़ के बिना यूज कर पाए. Making both the statements are as correct. Okay, we have it is implied condition. We are talking about implied condition. Condition implied होनी चाहिए. This is not implied condition. This is warrant. This is implied warranty. कि गुड्स को प्रॉपरली यूज करना, मतलब अपनी मर्जी से क्वाइट पोजेशन को यूज करना, दिस इज इम्प्लाइड वारंटी. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी. यू कैन रेफर टू द चार्ट दैट इज रिटन इन द दिस notes. Sale by sample includes implied condition, but the bulk matches the sample. This is implied condition. Warranty not condition. Which of the following statement correctly relates to fitness, merchantability, and doctrine of caveat emptor in sale of goods? Doctrine of caveat emptor says the buyer should be aware. The buyer should be aware before buying the goods. Buyer proper check करेगा कि goods ठीक है, खराब तो नहीं है, सामान देख के खरीदेगा. If the buyer buy goods by description from the dealer in those goods, there is an implied condition that they shall be mercantile quality. Buyer ने बताया है goods को, ठीक है. Buyer buys goods by description फ्रॉम द डीलर इन दोज गुड्स. जो डीलर गुड्स के साथ डील कर रहा है उसको डिस्क्रिप्शन दे के खरीदा है सामान. इसको हम इम्प्लाइड कंडीशन मानेंगे कि जो गुड्स होंगे वो मर्केंटाइबल मतलब यूजेबल क्वालिटी के हैं. इफ अ बायर एग्जामिन्स गुड्स बिफोर परचेज, गुड्स को प्रॉपर चेक कर लिया कि ठीक है सामान कोई गड़बड़ तो नहीं है, दे आर कैन स्टिल क्लेम डिफेक्ट विजिबल ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ड्यूरिंग इम्प्लाइड वारंटी, अंडर इम्प्लाइड वारंटी. एग्जाम्पल देती हूँ. मेरे घर ना एक टीवी आया था रिसेंटली. आई बॉट अ टीवी फ्रॉम दिस अमेजन. जब उन्होंने ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, उन्होंने खोला बॉक्स को, दिखा कि जो टीवी था वो पीछे से ना उसका जो बॉक्स है, जो उसकी बॉडी है उसमें ब्रेकेज था. जब इंस्पेक्शन कर रही थी मुझे दिख गया था कि वो जो बॉक्स वो जो टीवी का आउटर कवर है वो टूटा हुआ है. मैंने फिर भी उसको घर पे रख लिया टीवी को. अगर तो क्या मैं अब
इम्प्लाइड वारंटी बोल सकती हूँ उसको? नहीं। क्यों? आई हैव सीन द गुड्स ना, मैंने एग्जामिन कर लिया। क्या मैं उसको अभी रखूंगी और फिर भी डैमेजेस मांगूंगी? आई कैन रिटर्न दोज गुड्स, राइट? आई विल नॉट कीप द गुड्स विद मी. A buyer who relies on a seller's expertise for a specific purpose has protection under implied condition for fitness. I went to the seller. I want the goods. इसे सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया एंड सेलर ने कहा ठीक है मैम आप ये वाला गुड्स ले जाइए. मैंने सेलर की एक्सपर्टीज पे बिलीव करा और मैं वो गुड्स को अपने पास घर पे ले आई हूँ. क्या इसे इम्प्लाइड कंडीशन माना जाएगा कि जिस सेलर ने मेरे को बताया है कि इस कंडीशन के लिए काम हो जाएगा? बिल्कुल, बिकॉज seller knows what he is selling. So I'll be protected under implied condition. Making 1 and 3 correct is the correct answer. If a buyer examines goods, implied condition do not apply to defects that examination could have revealed. Which of the following statement correctly relate to fitness, merchantability, and doctrine of give it emptor in sales of goods? Usage of trade may give rise to implied warranties regarding the quality of goods. The doctrine of give it emptor means seller must ensure the product is suitable for any purpose the buyer may have. डॉक्ट्राइन एम्टर में इट इज सेइंग सेलर मस्ट इंश्योर कि जो गुड्स है वो सूटेबल है एंड फॉर द एनी पर्पज जो बायर जिसके लिए ले रहा है गुड्स उसके लिए गुड्स वो होने चाहिए सूटेबल होने चाहिए. Caveat emptor में we are putting a responsibility upon the buyer that the buyer should be aware before buying the goods. We are not putting any responsibility upon the seller, making statement number 2 incorrect. Trade customs can create create implied warranties or conditions. Caveat emptor places responsibility on the buyer, not the seller. Which of the following statement correctly describes the position and right of an unpaid seller under the Sales of Goods Act? A seller is considered unpaid even if, again, unpaid seller से related जो notes है वो PDF में है जो आपका homework है जिसे आप पढ़ सकते हैं अगर आपको कोई doubt हो. All you need is to go and download the PDF where you will find the notes written by me, handwritten by me, and the question and answers that we are doing in the class. A seller is considered unpaid even if the price has been paid through a check that later gets dishonored. सेलर को अनपेड मानेंगे अगर जो चेक मैंने आपको दिया था वो डिसऑनर हो गया है तो आपको अनपेड ही माना जाएगा. आपको पैसे तो नहीं दिए गए ना, आपको पैसे नहीं मिल पाए. द टर्म सेलर इंक्लूड्स ओनली मैन्युफैक्चरर्स. यहाँ पे ना सिर्फ 1, 2 and 3 रखा है. देयर इज नो नीड ऑफ 4 and 5. So let's edit it. The term seller includes only the manufacturer who sold the goods directly to the buyer. Seller में includes only लिखा है, सिर्फ मैन्युफैक्चरर को इंक्लूड करते हैं हम सेलर में. The term lien can be exercised even when the seller is acting as bailey for the buyer. Lien को right of lien can be exercised. Right of lien can be exercised when the seller is acting as a bailey for the buyer. लेन को हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल हम लेन को एक्सरसाइज कर सकते हैं. मेकिंग 1 and 3 as correct. 2 is not correct. The seller is broad and includes agent or consignor who stands in the position of the seller. A lien can be exercised even if the seller is holding the goods as bailey or agent. As per section 45, a seller is considered unpaid if payment is made through NI, that is negotiable instrument like check, and same is dishonored. Which of the following statement correctly describes the position and right of an unpaid seller during sales of goods under Sales of Goods Act 1930? The unpaid seller can withhold delivery of goods even when the ownership in goods has already passed to the buyer. A seller becomes unpaid only when the buyer refuses to take delivery of the goods.
सेलर तभी अनपेड होगा जब बायर ने गुड्स को डिलीवरी लेने से मना कर दिया है, ओनली लिखा है यहाँ पे, ठीक है। सेलर तभी अनपेड होगा जब रिफ्यूज हो जाएगी डिलीवरी लेने के लिए। An unpaid seller can withhold delivery of the goods even if the ownership is or passed of the goods have already passed to the buyer. Buyer के पास goods की ownership जा चुकी है, क्या अभी भी आप goods की delivery को withhold कर सकते हैं? नहीं. Both the statements are wrong. Lien and stoppage in transit applies when property is passed, but right to withhold delivery applies only when the property has not passed. Being unpaid relates to non-payment of price, not refusal to take the delivery. Which of the following statement correctly apply to the unpaid seller's right against the goods under Sales of Goods Act 1930? The right of stoppage in transit arise only when the buyer is declared insolvent. Again, जब सिर्फ और सिर्फ तब स्टॉपेज अलाउड होगा जब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएगा. Once the seller has obtained a court decree for price, his lien automatically comes to an end. Lien means to withhold the property. तब तक आपके पास प्रॉपर्टी है जब तक आपकी पेमेंट नहीं हो रही है. सेलर ने ऑब्टेन कर ली है डिक्री प्राइस की, तो अब आप लियन एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप गुड्स दे दोगे बायर को? नहीं. आप जब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे तब तक आप लियन को एक्सरसाइज कर सकते हो, मेकिंग सेकेंड एज इनकरेक्ट. ठीक है. अगर हम सेकंड इनकरेक्ट देखें एंड वी सी द रूल ऑफ एलिमिनेशन, हम एलिमिनेट कर दे सेकंड को, तो सेकंड यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो लेट्स एलिमिनेट बी एंड डी. A partial delivery of goods by the seller implies that lien on the remaining goods is always waived. कि पार्शियल डिलीवरी कर दी है सेलर ने, सपोज 10 kgs राइस की आपने मेरे से डिलीवरी मांगी थी, मैंने 5 kgs आपको डिलीवरी कर दी है, 5 बची है, ठीक है. पार्शियल डिलीवरी कर दी है सेलर ने, 5 पार्शियल नहीं करी है. That it is implied that the lien on the remaining goods is always waived. कि मैं 5 किलो को और अपने पास नहीं रख सकती हूँ. क्यों नहीं रख सकती हूँ? I have the right to keep those 5 kgs with me. I do have. Why? Because I'm not getting paid right now. If I will get paid, I'll send you the rest of the goods. ठीक है. मेकिंग थर्ड एज इनकरेक्ट टू. अब थर्ड फिर यहाँ पे भी है, तो लेट्स एलिमिनेट 3, मेकिंग सी एज इनकरेक्ट ऑप्शन. See, partial delivery does not necessarily waive liens unless it indicates intent to waive. Lien is not mostly merely because of decree for price has been passed. Lien has not lost merely because a decree of price has been passed. The moment you'll receive the price, आपकी lien right खत्म हो जाएगी. The right to stoppage in transit can only be exercised if the buyer becomes insolvent after the goods have been handed over to the carrier. Which of the following statement correctly apply to the unpaid seller's right against against the goods under Sale of Goods Act? The goods are said to be in transit until the buyer or his agent obtains delivery from the carrier. जब तक कैरियर से सामान ले नहीं लेता है बायर या एजेंट, तब तक हम उसे ट्रांजिट में कहेंगे क्योंकि डिलीवरी अभी तक हुई नहीं है. मेकिंग वन एज करेक्ट. जहाँ पे 1 नहीं है, लेट्स एलिमिनेट दैट. यहाँ पे 1 नहीं है और नीदर भी ऑप्शन नहीं होगा. इफ रीसेल इज डन विदाउट प्रायर नोटिस, द ओरिजिनल बायर कैन क्लेम प्रॉफिट फ्रॉम रीसेल. रीसेल कर दिया है बिना नोटिस दिए, ओरिजिनल बायर प्रॉफिट ले सकता है रीसेल से. Suppose when I sold the goods to you, they were coming for 100 rupees per kg. ठीक है. आप मेरे से गुड्स लेने नहीं आ रहे हो या आप मेरे को पेमेंट नहीं कर रहे हो, गुड्स मेरे पास ही पड़े हैं. अब मैं उन गुड्स को बेच रही हूँ क्योंकि वो पेरिशेबल है नेचर में. And when I resell them, for initially I sold you at this price. When I resell them, I resell them at A sold rice to B at 100 rupees per kg. B is now the owner, है ना. A resells at
110 rupees per kg. The rice belongs to B, but A is reselling them because B has not made the payment. 10 रुपीज का पर केजी यहाँ फायदा हो रहा है, तो जो 10 रुपीज का फायदा है, प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट जाएगा टू द ओरिजिनल बायर, दैट इज बी, making 2 as also correct. Both the statements are correct. If we do not give any prior notice of resale, the seller forfeits the right to claim damages and any profit of resale goes to buyer. नोटिस दिया होता तो नहीं देने पड़ते आपको एक्स्ट्रा पैसे बायर को, क्योंकि आपने बायर को बोला या तो पैसे दे दो वरना मैं किसी और को बेच दूंगा, बट बायर को आपने बताया ही नहीं और खुद बेच दिया, तो गुड्स तो अभी भी बायर की है ना. Transit continues until the buyer or his agent takes actual delivery. Which of the following statement relate to unpaid seller's right against the buyer personally under the Sales of Goods Act? The unpaid seller can file a suit for price of goods if property in goods have passed to the buyer. The right to claim interest from the buyer is an automatic right, regardless the contract term. If there is breach by the buyer, the seller can repudiate the contract and claim damages. Buyer ने breach करा है, तो seller repudiate कर सकता है and can claim damages. The right to claim interest from buyer is automatic right. Interest claim करने की right automatic right है, contract में कुछ भी लिखा हो. आप किसी से भी इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो बिकॉज इट इज एन ऑटोमेटिक राइट. नो, आप इंटरेस्ट ऑटोमेटिक राइट नहीं होता है. कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो माना जाएगा. देयर इज नो थिंग सच थिंग एज ऑटोमेटिक राइट. द अनपेड सेलर कैन, मेकिंग टू एज इनकरेक्ट. टू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मेकिंग ऑल दीज एज इनकरेक्ट. ए इज द करेक्ट आंसर. लेट्स रीड वन स्टेटमेंट एज वेल. The unpaid seller can file a suit for price of goods if property in goods has passed to the buyer. आपको मैंने गुड्स दिया, आपने मुझे पेमेंट नहीं करी, तो क्या मैं आपके अगेंस्ट केस कर सकती हूँ? मैं डेफिनेटली केस कर सकती हूँ. ठीक है, मेकिंग वन एज करेक्ट. Suit for price is available where property has passed and the payment is not made. Repudiation and damages are part of seller's personal right against the buyer. Interest can be claimed only if it is a part of contract or under any specific statutory condition. Last question from Sales of Goods Act. Which of the following statement relate to the unpaid seller's right against the buyer personally under the Sales of Goods Act? The right to resell always require prior permission from the court. रीसेल की राइट के लिए आपको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा परमिशन लेने. नहीं, all you need is to give a notice to the buyer. If the buyer has pledged the goods to a third party in good faith for value, the seller rights may be defeated. Buyer ने goods को pledge कर दिया है under good faith. Good faith में जो काम है अगेन करेक्ट होगा. ठीक है, बायर का जो काम है करेक्ट है. सेलर की राइट मे बी डिफीटेड. यस, सेलर्स राइट मे बी डिफीटेड. और मेकिंग स्टेटमेंट नंबर बी एज करेक्ट. A pledge to third party in good faith for the value can defeat the seller's right under section 53. Court's permission is not required to resell. Only conditions like notice and perishability applies. Any doubt in Sales of Goods Act? Do you have any doubt in Sales of Goods Act? चलिए. So we have completed Sales of Goods Act. If you have any doubt, please let me know in the chat section. I'm giving you a minute's time, then we'll start with Indian Partnership Act.
Let's start with Indian Partnership Act then. Indian Partnership Act is a different act. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ना इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट होता था. पार्टनरशिप एक्ट एक चैप्टर था, पार्टनरशिप एक चैप्टर था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. ठीक है, ऐसी सेल्स ऑफ गुड्स भी एक पार्ट था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. बट दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज गेटिंग वेरी बल्की एंड वेरी uneasy for people to understand. It was getting very difficult for people to understand. So हमने जो चैप्टर थे सेल्स ऑफ गुड्स के और पार्टनरशिप के, उनको अलग करके एक डिफरेंट सेपरेट एक्ट बना दिया. ठीक है, अब पार्टनरशिप क्या होती है? वी जस्ट विल रीड दिस. A partnership is relationship between persons who agree to share profit of a business carried by all or any acting for all, that is mutual agency. पार्टनरशिप की डेफिनेशन में हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं. when we start a business, we talk about पैसे कमाना, right? We talk about earning money. Do we ever talk about losses? No. So whenever we are entering into a partnership, we come with an intention to start a business, and to earn profit. And this business can be run by all of the people or by any people acting for all. For example, suppose आप, मैं और ये पेन मिल के एक पार्टनरशिप करते हैं. इस पार्टनरशिप में ये पेन कह रहा है कि मैं पैसे दूंगा, आप और मैं काम करेंगे. हम तीनों पार्टनर्स हैं. You and I are going to work, but this person is going to put money. This person is the investor who will take a percentage out of the profit. He will be treated as a partner, but he will not be working. ठीक है, he will just be giving money. तो इसका काम है पैसे देना, हमारा काम है बिजनेस को रन करना. So it can be either all the persons can be working, either see, suppose this is the person who is not working, he is also working. ठीक है, हम तीनों मिलके इक्वली पैसे डाल रहे हैं पार्टनरशिप में, एंड हम तीनों एक साथ पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस एक साथ रन कर रहे हैं. सो द बिजनेस कैन बी रन बाय ऑल ऑफ अस और बाय एनी ऑफ अस. चाहे आप, मैं और इनमें से, इन स्पेन में से, चाहे सिर्फ मैं काम करूं, हम तीनों काम करें, ये आप और मैं काम करें, ये पेन ना काम करे, दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन अस बिकॉज वी हैव अ म्यूचुअल एजेंसी. अगर पार्टनरशिप में प्रॉफिट होंगे तो हम तीनों में डिवाइड होगा, अगर पार्टनरशिप में लॉसेस होगा तो वो भी हम तीनों में डिवाइड होगा. ठीक है, दिस इज व्हाट म्यूचुअल एजेंसी सेज. What is the essential term for this partnership? That there should be an agreement. हम तीनों agree करने चाहिए किसके लिए? काम करने के लिए. There can be more people as well. There has to be at least two people and there can be more. So at least two or more persons should be there. प्रॉफिट शेयरिंग हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए. कोई भी पर्सन कभी भी लॉस के इंटेंशन से नहीं आता है. बिजनेस होना चाहिए, काम तो करना ही पड़ेगा ना. अब किसी को बिजनेस जो होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए. सपोज हम तीनों मिलके अग्री करें कि चलो लेट्स मेक अ गैंग ऑफ डेकॉइट्स और लेट्स मेक अ गैंग हु विल रॉब पीपल ऑन मूविंग व्हीकल्स. दिस इज नॉट अ लॉफुल बिजनेस. फिर हम कोर्ट में जाए कि अरे सर मेरे को पैसे नहीं दे रहा है. आप जा सकते हो इस काम के लिए? नहीं, क्योंकि आपका जो काम है, ऑब्जेक्ट है, पर्पस है पार्टनरशिप का, वो लॉफुल नहीं है. एंड म्यूचुअल एजेंसी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट की डिटरमाइन करने के लिए कि ये पार्टनरशिप है कि नहीं. दैट इज, आप मेरे एजेंट है, ऑल द पार्टनर्स आर एजेंट of each other as well as principal for each other. हम एक दूसरे के लिए काम भी कर रहे हैं, हम एक दूसरे से काम भी करवा रहे हैं. दिस इज व्हाट म्यूचुअल एजेंसी सेज. पार्टनरशिप और अदर एसोसिएशंस में डिफरेंस क्या होता है? गो हेड, यू कैन गिव इट अ रीड.
रजिस्ट्रेशन की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, दे रखा है सेक्शन 56 to 59. जनरल रूल है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड as a partnership firm, but it is good for you if you get your firm registered. It is good. Why? Because it will help you to have some legal remedies on your side. Law आपकी साइड पे रखने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए. नहीं कराओगे मर्जी है, आपको बाकी पार्टी आके सू कर सकते हैं, बट आप थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकते हैं. आप एक दूसरे को सू कर सकते हैं. The firm can be sued but the firm can not sue others. ठीक है, you cannot sue each other as well कि आप this person did a fraud with me, this person, suppose हम तीनों पार्टनर्स हैं, इस पर्सन ने फ्रॉड करा, ठीक है, हम तीनों को एक्स पार्टी को पेमेंट करनी पड़ेगी, एक्स पार्टी के साथ फ्रॉड करा. बट पार्टनरशिप कहता है कि अगर इसने फ्रॉड करा है तो आप और मैं इनसे पैसे मांग सकते हैं. बट अगर पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो हम इसको लाइबल नहीं कर सकते. वी कैन नॉट सू हिम फॉर आवर शेयर. सो देयर आर मेनी फैक्टर्स वाई रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज गुड फॉर द फर्म. ठीक है, पार्टनर्स की राइट क्या क्या है, गिव इट अ रीड. म्यूचुअल एजेंसी इज द हार्ट ऑफ पार्टनरशिप, दैट एवरी पार्टनर इज एन एजेंट प्लस प्रिंसिपल फॉर ईच अदर. Acts of partner binds up to the firm. Implied authority extends to usual business of the firm. लाइबिलिटीज़ क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होती है. न्यू पार्टनर्स जो होते हैं लाइबल, जो न्यू जब उनका एंटर होने के बाद जो भी एक्ट हुआ है उसके लिए लाइबल होंगे. आउट गोइंग पार्टनर्स उन सब एक्ट के लिए लाइबल होंगे जब तक वो गए नहीं है तब तक जो काम हुआ था फॉर्म में. ठीक है, प्लस ही हैज़ टू गिव नोटिस बिफोर लीविंग द फर्म. माइनर एज अ पार्टनर, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? Partner can be added to the benefits of the partnership. He can be admitted only for benefits. Again an important topic. राइट्स क्या होती है इसकी, प्रॉफिट में शेयर करता है और ये इंस्पेक्ट कर सकता है अकाउंट्स को. इसकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती, ओनली लाइबिलिटी इज अप टू हिज शेयर. जितना उसकी शेयर है उतने तक की उसकी लाइबिलिटी है. मतलब सपोज ए है एक पर्सन, ए माइनर है, A is a minor, admitted for admitted as a beneficiary to partnership. ठीक है, he gets 20% out of the profit. Suppose the firm faces loss. Will A still get the share? No, because जब losses है, because in the case of loss you do not get money, rather your share is paid towards the loss. Rather your share is paid towards the loss. ठीक है, सपोज एक माइनर जो पार्टनरशिप की बेनिफिट्स में एडिड था, ये मेजर हो जाता है. ए becomes major. Now he has 6 months time to give a public notice in which he will tell the public at large कि मैं पार्टनर चूज करता हूँ बनने का फर्म का या नहीं. अगर ये 6 महीने के अंदर बता देता है कि मेरे को पार्टनर बनना है, तो ठीक है, दैट इज वेल एंड गुड. नहीं बताता है तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा. इफ इट डजंट गिव एनी सॉर्ट ऑफ नोटिस, ही विल ऑटोमेटिकली बिकम अ पार्टनर.
But if he gives a notice to the public at large that I do not want to be a partner to the firm, from that day onwards, he will stop being a partner to the firm. He was never a partner. He will not be a partner to the firm. He will never be considered to be a partner of the firm. Let's start with the MCQ. अच्छा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स व्हेन द पार्टनरशिप इज चेंजिंग, एक पार्टनर जा रहा है या दूसरा पार्टनर आ रहा है, ठीक है. एग्जाम्पल, पार्टनर इज रिटायरिंग और अनदर पार्टनर इज एडमिटिंग. तो जो ओरिजिनल पार्टनरशिप के एग्रीमेंट था वो डिसॉल्व होकर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट बन रहा है, ठीक है. फर्म का डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस का खत्म हो जाना. तो देयर इज अ डिफरेंस. पार्टनरशिप का खत्म होना और पार्टनरशिप का फर्म का डिसॉल्व होने में डिफरेंस होता है, ठीक है. Let's start with the MCQ now. Which of the following statement correctly relates to the legal nature? I would request you all to give me an answer in the chat section. Which of the following statement correctly relate to the legal nature of the partnership under Indian law? A partnership is a contract-based relationship and does not arise from personal status or inheritance. पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशनशिप होती है और ये इनहेरिटेंस या पर्सनल स्टेटस से नहीं आती है. क्यों आज मैं एक पार्टनर हूँ फर्म का, क्या मेरा सन भी पार्टनर बन जाएगा फर्म का? नहीं. He'll not get the partnership just because he is my son. He is inheriting the right to become a partner. The Indian Partnership Act operates entirely independent of Indian Contract Act. क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है? पार्टनरशिप में भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट? आप और मैंने एग्री करा है काम करने के लिए, सो वी आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. विल दैट कॉन्ट्रैक्ट नॉट बी बेस्ड ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? दैट विल बी. एंड पार्टनरशिप एक्ट जब मैं स्टार्ट करी थी मैंने आपको बताया था कि C is the answer. Somebody saying Anand Sharma ji saying C is the answer. So C is not the answer. Let's read the questions first, statements first. ठीक है. जब आप जब मैंने स्टार्ट करी थी क्लास, मैंने बताया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था पार्टनरशिप, जो हटा के अब हमने एक स्पेसिफिकली एक्ट बना दिया है. तो दोनों एक दूसरे के साथ कंकरेंटली चलते हैं, साथ साथ. इट कैन नॉट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली. A Hindu undivided family running a business is regarded as partnership under the Partnership Act. HUF is not a partnership. HUF एक different status है. HUF में you come to the this business because you hold a status in the Hindu undivided family, making A as the correct option. It is totally okay to give a wrong answer. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एग्जाम से बल्कि याद आएगा कि आपने यहाँ पे आंसर गलत दिया था, तो इस आंसर को ठीक करना है, ठीक है. सो डो नॉट शाई अवे फ्रॉम आंसरिंग इन द चैट सेक्शन. ओके, ए इज द करेक्ट आंसर. Partnership arises from contract, not status. Indian partnership applies. Indian Contract Act still applies, and the Partnership Act is considered a special contract law supplementing it. HUF is not a partnership since its relation arises from status, not contract. Which of the following statement correctly relate to the legal nature of partnership under Indian law? The definition of partnership emphasizes profit sharing and mutual agency. A firm is a legal entity separate from partners who constitute it. A partnership firm is a legal entity separate from the partners. Partnership firm is because of its partners. The law does not give it a separate status, making 2 as incorrect. 2 as incorrect. A is the correct answer. Unlike company, a firm is not a separate legal entity distinct from its partners. The definition includes both sharing of profit and the concept of mutual agency.
Next question. Which of the following statements correctly describe the essential characteristics and legal limitations of a partnership? A partnership must contain of at least two individual competent to contract. एक पार्टनरशिप में एटलीस्ट दो पर्सन होने चाहिए. पार्टनरशिप में एक सिंगल पर्सन कभी पार्टनर नहीं हो सकता, कम से कम दो होना चाहिए. देयर कैन बी मेनी पीपल एज वेल. A firm can have up to 150 partners if approved by all existing partners. So the maximum number for having partners is 150. Statement number 3 is saying the maximum number of person in a partnership as notified is currently capped at 100. यहाँ पे लिखा है 150, यहाँ पे लिखा है 100. So either 2 will be correct or 3 will be correct. There is no fourth statement. तो A and D तो automatically incorrect हो गया, है ना. A and D automatically incorrect हो गया. So either A will be correct or statement number 2 will be correct or 3 will be correct. दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते. तो दोनों साथ साथ यहाँ पे दे रखा है C में, मेकिंग C एज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो हमें पता चल गया इससे कि जो मैक्सिमम कैप है 100 पे. समटाइम्स B इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड रजत जी. At least two competent persons are required. The legal limit is 100 as per section 464 of the central government notification and the central government notification. The cap is 100 and exceeding it makes a firm an illegal association. अगर 100 से ज़्यादा people है as partners, उसे हम illegal association बुलाएंगे. Which of the following statement correctly describes the essential characteristics and legal limitations of partnership? If a number of partners fall to 1, the partnership continues for up to 6 months. Suppose आप और मैं पार्टनर हैं, आप चले गए हैं फॉर्म छोड़ के, मैं अकेली पार्टनरशिप क्या रन कर सकती हूँ. पार्टनरशिप का मतलब है एटलीस्ट टू पीपल. आप चले गए हो पार्टनरशिप छोड़ के फॉर वट एवर रीजन्स, आइदर यू रिटायर और यू आर इंसॉल्वेंट और वट एवर XYZ रीजन्स. क्या मैं फिर भी 6 महीने तक पार्टनरशिप को रन कर सकती हूँ? नेक्स्ट, द कंपनी कैन बी अ पार्टनर इफ इन अ फर्म इफ परमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. कंपनी एक फर्म की पार्टनर बन सकती है अगर उसका MOA अलाउ करे. आंसर प्लीज. एक कंपनी पार्टनर बन सकती है, मेकिंग बी एज करेक्ट. देखो, आप और मैं पार्टनर है, आप पार्टनरशिप छोड़ के चले गए, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गया. ठीक है. द लॉ डज नॉट प्रोवाइड अ ग्रेस पीरियड. with only one partner it ceases to be a partnership. A company is a legal person and can enter into partnership if MOA allows. Yes, B is the correct answer. Next, which of the following statement appropriately highlights the operational requirement and characteristics of a valid partnership? A partnership must be formed to conduct some lawful business activity. A written agreement is mandatory to form a valid partnership under the act. Written agreement होना ज़रूरी है पार्टनरशिप में. ठीक है, ऐसा बोल रही है स्टेटमेंट नंबर 2. शेयरिंग अ प्रॉफिट इज नेसेसरी. प्रॉफिट शेयरिंग नेसेसरी है, बट शेयरिंग लॉसेस कैन बी अवॉइडेड बाय एग्रीमेंट. अ पार्टनरशिप मस्ट बी फॉर्म टू कंडक्ट सम लॉफुल बिजनेस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 एवरीबॉडी. देखो, जब हम पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं, इट इज़ एसेंशियल कि हम पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग करें. बट सपोज एक पर्सन है, ये आप, मैं और ये पेन पार्टनर्स है. ये पार्टनर कह सकता है कि मैं प्रॉफिट्स में तो पार्टनर, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, सारी इन्वेस्टमेंट मेरी है. ठीक है. प्रॉफिट का एक परसेंटेज मेरे पास जाएगा, बट अगर लॉसेज होंगे तो मैं नहीं, आई विल नॉट फेस द लॉसेज. दिस इज व्हाट इज रिटन इन द एग्रीमेंट. कैन वी राइट दिस? येस, वी डेफिनेटली कैन राइट दिस. वी कैन राइट दिस. ठीक है. वी कैन राइट इट इन द एग्रीमेंट कि मैं लॉसेज शेयर नहीं करूँगा. कहीं पे भी लॉ में रिक्वायर्ड नहीं है कि रिटन अग्रीमेंट होना ज़रूरी है पार्टनरशिप के लिए. इट इज़ नॉट मैंडेटरी.
सपोज आप और मैं दोनों वी आर फ्रेंड्स, वी कम टुगेदर, वी से कि लेट्स डू अ बिजनेस टुगेदर, 50% तेरा 50% मेरा। यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक इट मैंडेटरी बिकॉज रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो ऑप्शनल, मेकिंग 1 and 3 करेक्ट। A is the correct option. Partnership can be oral or written. No written agreement is mandatory. Profit sharing is essential, but losses can be excluded for partners via agreement. The business must be lawful and qualify as trade, profession, or occupation. Which of the following statement highlights the operational requirement and characteristics of a valid partnership? Person sharing profits are allowed always deemed to be partners in a firm. जो profit sharing कर रहे हैं वो deem करे जाएंगे कि ये partner है. Mutual agency implies each partner is a principal and agent for the an agent in firm's affair. देखो suppose A B पार्टनर्स है, ये सी को बोलते हैं कि गुड्स दे दो, सी सेलर है, ठीक है, ये सी को कह रहा है प्लीज हमें गुड्स दे दो, एंड जो भी हमारा प्रॉफिट होगा ना उसका 2% आपका, 2% योर्स। सेलर हु इज जस्ट सेलिंग द गुड्स गेट 2% आउट ऑफ द प्रॉफिट। दे सेज कि वी कैन नॉट पे यू द अमाउंट बट वी कैन गिव यू 2% एज अ प्रॉफिट। ये एग्रीमेंट कर लेते हैं। क्या यहाँ पे हम सी को पार्टनर मानेंगे बिकॉज ही इज गेटिंग 2% ऑफ द प्रॉफिट? Question number 6 is on the screen. Give me an answer, please. See, just because he is getting a percentage in the profit, he will not be deemed to be a partner, making 1 as incorrect. B is correct because mutual agency is the heart of partnership. Sharing profit alone is not conclusive proof of partnership. Mutual agency is a key feature where partners are both agents and principal for each other. Which of the following statements are correct regarding different types of traditional partnerships under Indian Partnership Act? A partnership at will can be dissolved unilaterally by any partner through a written notice, even if no specific duration was originally agreed. Partnership at will जो होती है वो यूनिलैटरली मतलब अपनी मर्जी से डिसॉल्व करी जा सकती है, बस आपको एक नोटिस देना है और कोई स्पेसिफिक टाइम लिखा नहीं होगा कब नोटिस देना है, ठीक है। अ पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, मैंने और आपने एग्री करा कि 2 साल के लिए पार्टनरशिप करेंगे, उसे कहते हैं पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। ऑटोमेटिकली रिन्यूज द पार्टनरशिप, automatically renews into a partnership at will if business continues post expiry without a new agreement. अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब हमने आपने और मैंने अग्री करा है कि हम एक ब्रिज बनाएंगे, जब ब्रिज बनना खत्म हो जाएगा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। द फर्म कंटिन्यूज इंडेफिनेटली अनलेस डिसॉल्व्ड बाय म्यूचुअल कंसेंट। क्वेश्चन नंबर 7, पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? आप और मैं अपनी मर्जी से पार्टनर बने, ठीक है। आपने कहा मेरे को नहीं रहना मैम आपके साथ पार्टनर, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है बिजनेस करने में, आप मुझे एक नोटिस दोगे और पार्टनरशिप खत्म कर दोगे, ठीक है। दिस इज व्हाट स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 आर सेइंग, दिस इज व्हाट दे आर, मेकिंग 1 and 2 करेक्ट, 3 incorrect. So C is the correct answer. The particular partnership dissolves automatically upon completion of a specific job or venture, not indefinite. A fixed term fixed term ends. If the fixed term ends, partners continues without a fresh agreement. Partnership converts into a partnership at will. Partnership and will at will can indeed be dissolved by any partner giving notice in writing to others. If no date is mentioned, dissolution takes effect from the date of the notice. Next, which of the following statements are correct regarding different types of traditional partnership under Indian Partnership Act? A particular partnership is established primarily for completing a specific business project or venture. आप और मैंने एग्री करा कि हम दोनों मिलके एक ब्रिज प्रिपेयर करेंगे, जैसे ही वो ब्रिज का काम कर खत्म होगा
हम दोनों की पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए ही पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप एट विल रिक्वायर रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म बिफोर इट कैन बी डिसॉल्व। डिसोल्यूशन करने से पहले रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन क्यों कराना है? अगर रिजोल्यूशन करानी है, मेरे को आपकी और मेरी मर्जी से हमने पार्टनरशिप बनाई, इसको रजिस्टर कराऊंगी मैं और फिर मैं उसको डिसॉल्व करूंगी। इज दिस एनी लॉजिक? Making 1 as correct, 2 as incorrect. A is the correct answer. Registration is not a precondition for dissolution of a partnership at will. Particular partnership is a project specific sorry, and established for a particular assignment. Which of the following statement accurately reflect features of a LLP under Limited Liability Partnership Act? ठीक है, हम LLP करेंगे नेक्स्ट सेशन में कवर. दिस इज अ स्पेशल क्वेश्चन फॉर यू राइट नाउ. ठीक है. Every LLP must have at least 2 designated partners, one of whom must be resident of India. 2 DPs होने चाहिए और एटलीस्ट उनमें से एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए. ये रिक्वायरमेंट है. LLPs offer limited liability protection to partners, but partners are still liable jointly for the firm's debt. पार्टनर्स को लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन देते हैं, बट पार्टनर स्टिल लाइबल होंगे फर्म की डेट के लिए. A partner is an LLP. A partner in an LLP is considered an agent of the LLP, but not to other partners. देखो, a partner in an LLP is considered as an agent to LLP, बट एक दूसरे के एजेंट नहीं होते. म्यूचुअल एजेंसी का फंडा LLP पे नहीं लगता है. दैट इज वाई 3 इज करेक्ट. LLP offers limited liability protection, but partners are still jointly liable for firm's debt. If limited liability की concept है तो क्यों liable होंगे partners firm के debt के लिए? ठीक है. That is why 1 and 3 are correct, 2 is not. Give me a second, please. At least 2 individuals are required as designated partners with one resident of India as per LLP Act. Each partner is considered as an agent of LLP, not of other partners. Partners in an LLP are not jointly liable for each other's misconduct or unauthorized action. Liability is limited. Next question is for you on the screen. Please give it a read. Give me a second as well. आप इसे read करो and give me an answer for the same. Which of the following statement accurately reflects features of LLP under Limited Liability Partnership Act? LLPs can be voluntarily wound up or compulsorily by NCLT under certain legal provisions. Either you can wind up the LLP yourself or NCLT can make it compulsorily winding up requirement अगर legal provisions के against अगर legal provisions में दे रखा है. NCLT is National Company Tribunal, Company Law Tribunal. Indian Partnership Act 1932 governs the internal functioning of LLP. Indian Partnership Act LLP को गवर्न करती है. अगर LLP को गवर्न करेगी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो LLP एक्ट की क्या नीड है हमारे को? There is no need of LLP Act if the Indian Partnership Act is going to cover the LLPs. ठीक है. Making 2 as incorrect, 1 is correct.
A is the correct answer. LLP may be wound up voluntarily or through NCLT proceedings under specific conditions. The Indian Partnership Act does not apply to LLPs unless specifically mentioned in the LLP Act. Which of the following statements relate to partners' general duties and fiduciary responsibilities are correct? A partner must provide true account and complete information regarding all matters affecting the firm, even to the legal heirs of another partner. लीगल एयर्स को भी बताना ज़रूरी है, ठीक है। और इन सारे पार्टनर्स सारे ट्रू अकाउंट देंगे फर्म का, जो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है दैट शुड बी ट्रू. A partner may limit the liability of fraud in a partnership agreement if all the other partners consent. Partners जो है may limit his liability for fraud in the partnership agreement. Fraud के लिए अपनी liabilities को अरे पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिख रही है बात, इफ ऑल अदर पार्टीज कंसेंट, अगर ऑल पार्टीज कंसेंट करें इस बात को. A partner who commits fraud during the course of business must indemnify the firm for the resulting loss regardless of any internal agreement. जो फ्रॉड कर रहा है उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा फर्म को, चाहे कोई अग्रीमेंट हो या ना. अगेन एन एग्जाम्पल कम्स हियर. ये मैं एंड आप एक पार्टनर है, मैंने कोई फ्रॉड करा फर्म में, तो इस सिचुएशन में हम तीनों मिलके पेमेंट करेंगे. फर्म्स में फ्रॉड करा थर्ड पार्टी के साथ, इस पेन के साथ मैंने फ्रॉड करा, थर्ड पार्टी है पेन, हम तीनों की जॉइंट लाइबिलिटी है टुवर्ड्स दिस पेन आउटसाइड, ठीक है. यहाँ पे इस सिचुएशन में हम तीनों मिल के इसको पे करेंगे क्योंकि आउटसाइडर के टुवर्ड्स तो हम एक एंटिटी है. जब इसको पेमेंट हो गई, सपोज 1,50,000 की मैंने डिफॉल्ट किया था, फ्रॉड किया था, इसको हमने 1,50,000 दे दिए, मेकिंग 50,000 पेबल बाय यू, 50,000 पेबल बाय मी, 50,000 पेबल बाय हिम. अब आप दोनों ने बेफालतू में 50,000 ईच दिए हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने गलती करी, मैंने फ्रॉड किया. इस सिचुएशन में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप दोनों को इंडेमनीफाई करूँ. इंडेमनीफाई मत करूँ मतलब आप दोनों को आपके लॉसेस को गुड करो, दैट इज मेरे को आप दोनों को पैसे वापस देने चाहिए, चाहे कोई इंटरनल एग्रीमेंट हो इस पॉइंट पे या ना हो. बिल्कुल मुझे करना पड़ेगा, आप क्यों फेस करोगे मेरे फ्रॉड की वजह से लॉसेस, ठीक है. मेकिंग 3 एज करेक्ट. अब एलिमिनेशन का रूल देखते हैं. तो 4 तो यहाँ पे कहीं पॉइंट नहीं दे रखा, तो डी एंड बी तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, डी एंड बी इनकरेक्ट हो गया. थर्ड करेक्ट है, थर्ड यहाँ पे भी ऑप्शन है, थर्ड यहाँ पे भी ऑप्शन है. लेट्स सी स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 अगेन. पार्टनर्स मस्ट प्रोवाइड ट्रू अकाउंट. बिल्कुल ट्रू अकाउंट देना रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल एयर्स को भी बताना पड़ेगा कि क्या ट्रू अकाउंट है. मेकिंग 1 एज ऑल्सो करेक्ट. लेट्स सी स्टेटमेंट नंबर 2. पार्टनर में लिमिट हिज लायबिलिटी फॉर फ्रॉड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट if all other partners agree. फ्रॉड में आप अपनी लाइबिलिटी को लिमिट नहीं कर सकते. क्यों? देखो सेक्शन 10 imposes an absolute duty. A partner cannot contract out of liability for fraud. Section 9 mandates partners to render true accounts and full information even to the partner's legal heir or legal representatives. The duty to indemnify due to fraud is absolute. Which of the following statement related to partners' general duty and fiduciary responsibility are correct? If a partner profits by using the firm's name or property for personal business, he is required to share the profit with the firm. मेरे को पर्सनल बेनिफिट हो रहा है फर्म का नाम यूज करके, तो मुझे वो पैसे फर्म को देने चाहिए ना, क्योंकि मैंने फर्म का नाम यूज करके प्रॉफिट लिया है. अब यही बोल रही है स्टेटमेंट नंबर 1. A partner may retain profits
from a completing business if the partnership deed is silent on an issue. रिटेन प्रॉफिट, प्रॉफिट को रिटेन कर सकता है बिजनेस कंप्लीट करने के बाद. हम तीनों गैन पार्टनर हैं. एग्जाम्पल, मैंने काम खत्म कर दिया है, मैंने इस पर्सन के साथ डील करा है, मैंने इसका काम कंप्लीट करके दिया है हम दोनों की बिहाफ पे. इन्होंने मुझे पैसे दिए, मैंने आके आप दोनों को बताया नहीं, वैसे मिल गया. मैंने कहा काम ही नहीं हुआ था वहां. तो इस सिचुएशन में क्या मैं पैसे अपने पास रख सकती हूँ? क्योंकि साइलेंट है इस बात मैटर, साइलेंट है इस सिचुएशन में. पार्टनरशिप डीड साइलेंट है. मैं तो अपने खुद के लोग के साथ फ्रॉड कर रही हूँ, क्या ये अलाउड होगा? नहीं. तो मेकिंग टू एज इनकरेक्ट, वन एज करेक्ट. देखो, प्रॉफिट फ्रॉम द यूज ऑफ पार्ट फर्म्स रिसोर्सेज मस्ट बी टर्न टू द फर्म even if the deed is silent. Competing business profit must be given to the firm. Which of the following statement regarding the mutual rights, duties of partners and properties usage are valid under the Indian Partnership Act? Unless agreed otherwise, all partners share profit and losses equally, regardless of capital contribution. A partner can claim interest on capital even in the case of loss. लॉस में आप किसी भी सिचुएशन में इंटरेस्ट नहीं मांग सकते. खुद का पैसे प्रॉपर्टी पे देके खुद ही कंपनी लॉस सफर कर रही है और आप लॉस को दे रहे हो सामने वाले को, और अब आप इसमें कह रहे हो कि मुझे इंटरेस्ट पे करो. इज दैट पॉसिबल? प्रोवाइडेड द पार्टनरशिप डीड परमिट्स इट. Property acquired from firm fund is treated as firm's property unless there is a contrary agreement. फर्म के पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो फर्म की प्रॉपर्टी होगी, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी. मेकिंग 3 एज करेक्ट. जहाँ पे 3 नहीं दिया उसको एलिमिनेट करते हैं. लेट्स एलिमिनेट सी. अब हमने बोला है इवन इन द केस ऑफ लॉसेस आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कैपिटल पे. नहीं देना पड़ेगा, लॉसेस के केसेस में आप इंटरेस्ट नहीं देंगे. मेकिंग 2 एज इनकरेक्ट. ठीक है, तो 2 कहाँ पे है? यहाँ पे 2 दे रखा है एंड यहाँ पे 2 दे रखा है. तो लेट्स एलिमिनेट दीज 2 एज वेल. तो ए इज द करेक्ट आंसर. Equal sharing for profit losses applies unless otherwise agreed. Interest on capital is payable only from profit. Section 14 deems acquisition from firm funds as firm's property unless otherwise agreed. Which of the following statements regarding mutual rights, duties of partners, and property usage are valid to under the Indian Partnership Act 1932? Partners can mutually decide to allow some partners to access books while restricting others. कुछ पार्टनर्स को बुक्स अलाउ कर सकते हैं चेक करने के लिए, बट हम बाकियों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. देखो, कोई पार्टनर्स ना फॉर द सेक ऑफ नेम होते हैं. फॉर द सेक ऑफ नेम अगर मैंने उनको अलाउ कर दिया मेरी बुक्स को चेक करने के लिए, दैट विल बी रॉन्ग फॉर मी एंड द फर्म. क्योंकि फर्म मे बी फर्म के सीक्रेट्स ऑफ एम, फर्म कहाँ से पैसे कमा रही है वो पता चल जाएगा. So we can restrict some partners. Interest at 9% per annum is payable on capital contributed by partners regardless on firm's profitability. Capital pay payment सिर्फ तब होगी जब profit होगा. This is not regardless. This is not regardless. Making 2 as incorrect. Plus it is 6% per annum. Interest is payable at 6% per annum only on excess payment and only if not otherwise agreed. Partners can allocate rights like access to books differently through agreement. See, I would request you all to give me a reply in the chat section. This will help you in the exam. क्योंकि अगर आप गलत भी आंसर कर रहे हो तो भी आपको पता चल रहा है कि आपने यहाँ पे गलत आंसर दिया था. तो जब एग्जाम में सेम क्वेश्चन अपेयर होगा तो आपको याद आएगा कि अरे मैं यहाँ पे गलत था तो इसका आंसर ये करेक्ट होगा. अगर आप आंसर नहीं दोगे तो जस्ट क्वेश्चन पास बाय हो रहे हैं आपके. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बिजनेस कंडक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन पार्टनर्स आर एक्यूरेट? The nature of firm's business can be changed by majority vote of partners subject to notification. आज फर्म साइकिल का काम कर रही है, कल फर्म कार का काम करना चाहेगी. फर्म का जो बिजनेस है वो मेजॉरिटी वोट से चेंज हो जाएगा. आप, मैं और ये पेन साइकिल का काम करता है. ये पेन एक पार्टनर है, इंडिविजुअल समझेंगे हम इसे.
आपने और मैंने एग्री कर लिया कि चलो आज साइकिल काम छोड़ के ना हम कार बनाने का काम स्टार्ट करते हैं। इसने नहीं एग्री करा है, ठीक है? तो क्या हम फर्म का जस्ट बिकॉज यू एंड आई हैव अग्रीड, बिकॉज वी आर इन मेजॉरिटी, वी कैन डू एनीथिंग वी वांट टू। जब हम आए थे, हम सब साथ मिलके आए थे इस पॉइंट से ना कि हम बिजनेस करेंगे और पैसे कमाएंगे। अगर ये अग्री नहीं कर रहा है तो कैसे हम फर्म का बिजनेस चेंज कर सकते हैं? The mutual rights and duties of partner may be implied by their course of dealing. म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज जो है पार्टनर्स की इम्प्लाइड हो सकती है बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग, कि क्या उनकी ड्यूटी है, क्या किस तरीके से वो डील करें, ठीक है? आफ्टर अ पार्टनर एग्जिस्ट द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर ऑटोमेटिकली टर्मिनेट अनलेस रिन्यूड। आप, मैं और ये पेन पार्टनर है, मैंने फर्म को छोड़ दिया है, मैं छोड़ के चली गई हूँ, मैं चली गई हूँ, तो क्या आप दोनों की जो ड्यूटीज है वो भी खत्म हो गई है? और क्या आप दोनों की जो राइट्स है वो भी खत्म हो गई है? नहीं, ऑटोमेटिकली टर्मिनेशन नहीं होता है, ठीक है? मेकिंग सी एज करेक्ट, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 2 ही करेक्ट है सिर्फ। देखिए, राइट्स एंड ड्यूटीज कैन बी इम्प्लाइड बाय कंडक्ट अंडर सेक्शन 11। Rights and duty remain the same after change in partners unless otherwise agreed. Change in business nature requires unanimous consent, not majority. हम तीनों को agree करना पड़ेगा. Which of the following statement regarding business conduct and contracts between partners are accurate? An agreement restricting a partner from engaging in any other business is valid despite being in restraint of trade. एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग अ पार्टनर, मना करे आप पार्टनर को कि फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी अदर बिजनेस इज वैलिड डिस्पाइट बीइंग अ रिस्ट्रेंट इन ट्रेड। आप, मैं और ये पेन पार्टनर है, हम तीनों ने एग्री करा जब हम पार्टनरशिप में आ रहे थे कि आप सेम तरह का बिजनेस नहीं कर सकते हो, ठीक है? या एक्स तरह का बिजनेस नहीं कर सकते हो। वी आर पुटिंग अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ईच अदर बेसिकली, कि आप कहीं और काम नहीं कर सकते हो, ठीक है? क्या ये अलाउड होगा? Although it is a restraint on trade, a restraint of trade is not allowed as per Contract Act. Yes, this will be allowed. क्यों? हम अपनी पार्टनरशिप फर्म का इंटरेस्ट सेव करने के लिए कोई एक्ट कर सकते हैं जिसमें हम restraint of trade भी ला सकते हैं. Differences on routine business matter can be decided by majority provided all partners get a chance to express their view. रूटीन बिजनेस मैटर को हम मेजॉरिटी से चेंज कर सकते हैं प्रोवाइडेड सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। रूटीन बिजनेस मैटर कि हम सामान इससे खरीदते थे, आप, मैं और ये पेन सामान इस ए पर्सन से खरीदते थे, हमें सामान समझ नहीं आ रहा है इसका, वी आर नॉट लाइकिंग द गुड्स दैट ही इज सेलिंग टू अस, वी कैन आस्क दिस पर्सन फॉर द गुड्स, ठीक है? मैं प्रपोजल लेके आई कि यार इसका ना सामान काम जो सामान है मेरे को समझ नहीं आ रहा, द गुड्स दैट दिस पर्सन इज गिविंग टू अस इज समथिंग दैट वी आर नॉट लाइकिंग, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट टू द स्टैंडर्ड्स दैट वी हैव सेट। सो एवरीबडी कैन पुट अप देयर पॉइंट ऑफ व्यूज कि क्यों नहीं लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, एटसेट्रा एवरीथिंग, एंड वी कैन चेंज द रूटीन मैटर. So making both the statements as correct, routine decisions can be made by majority after allowing all to express views. Restriction on parallel business is valid even if it is technically restrains trade. Which of the following statement correctly describes the agency role of a partner in a firm? The partner can legally bind the firm only when acting in firm's name and in ordinary course of business. पार्टनर लीगली बाइंड कर रहा है बिजनेस फर्म को जब वो फर्म के नाम पे काम कर रहा है और ऑर्डिनरी बिजनेस में काम कर रहा है, बिल्कुल कर सकता है अपने काम से. इफ अ पार्टनर साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट solely in his own name, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, the firm is still bound by it. A partner is considered an agent of the firm for matters connected to the firm's business. एजेंट मानेंगे हम पार्टनर को फर्म का अगर हम फर्म से रिलेटेड काम कर रहे हैं. We are the partners for each other, we are principal for each other, and partnership firm की बनती किससे? पार्टनर से बनती है. तो we'll be considering a partner as an agent to the firm, partnership firm if we are doing a work of the firm. मेकिंग, देखो फोर्थ ऑप्शन ही नहीं है तो बी इनकरेक्ट हो गया, डी इनकरेक्ट हो गया,
ठीक है, थर्ड करेक्ट हो गया, तो थर्ड यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अगर आप अपने नाम पे काम कर रहे हो, इफ आई एम डीलिंग इन माई ओन नेम, वाई विल फर्म बी लायबल फॉर इट, मेकिंग टू एज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे सी भी एलिमिनेट हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। A partner can bind the firm when acting in the firm's name and during the ordinary course of business. If the partner contract in his personal name, he bears personal responsibility and the firm is not liable. As per Section 18, a partner is an agent to the firm for its business. Which of the following statement correctly describe the agency role of a partner in a firm? A firm is never liable for unauthorized act of the partner even if ratified by other partners. अगर मैंने ratify, आपने, मैंने और इस पेन पार्टनर्स है, ठीक है, ये पेन पार्टनर है, हमने इस पेन ने अनऑथराइज्ड एक्ट करा और आपने और मैंने उस एक्ट को अलाउ कर दिया, ठीक है, हमने उस एक्ट को रेटिफाई कर दिया। हमने इस एक्ट को रेटिफाई कर दिया है। क्या फर्म अभी भी, रेटिफाई मतलब अलाउ कर दिया है, क्या फर्म अभी भी लायबल नहीं होगी उस एक्ट के लिए? A partner's agency status arises automatically by virtue of a partnership and not by external agreement. पार्टनरशिप की एजेंसी स्टेटस अराइज करेगा बाय द वर्च्यू ऑफ पार्टनरशिप, बिकॉज पार्टनरशिप है इसलिए एजेंसी का पर्पस बनता है। कोई एक्सटर्नल एग्रीमेंट की नीड नहीं है हमारे को इसके लिए कि आप मेरे म्यूचुअल एजेंट है, राइट? नहीं है हमारे को, क्योंकि हम पार्टनर्स हैं, हम एजेंट है एक दूसरे के लिए। मेकिंग टू एज करेक्ट, वन एज इनकरेक्ट. Partners can ratify unauthorized act after full knowledge, making the firm liable. The agency relationship is inherent in partnership structure, not dependent on separate documentation. Which of the following are valid statement about the implied authority of a partner in a trading firm? Trading firm में क्या implied authority मानेंगे? A partner can pledge the goods of the firm to secure loan under under implied authority. Pledge कर सकता है goods को लोन लेने के लिए और इसे हम implied authority मानेंगे। ये कह रही है statement number 1. A partner can open a bank account in the name of the firm without explicit permission. एक परमिशन नहीं दिया है मैंने, ठीक है, हम तीनों पार्टनर्स हैं, आप और मैं पार्टनर है, मैंने फर्म के नाम पे एक अकाउंट खोल दिया, बैंक अकाउंट, मैं अलाउड भी नहीं थी, क्या ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में आएगा? A partner can borrow money on behalf of the firm as part of implied authority. पार्टनर बोरो कर सकता है on behalf of money firm money. Partner can borrow, partner can pledge. Partner can open an account, but there should be an explicit permission. There is no explicit permission, making 2 as incorrect, 1 and 3 as correct, making A as a correct answer. Pledging, borrowing allowed है, implied authority मानी जाएंगी. Opening banking authority require express authority. Which of the following are valid statements about the valid implied authority of a partner in a trading firm? A partner can settle a dispute by arbitration without needing express authority. Arbitration से matter को solve कर दो और authority की need आपको है नहीं. A partner can receive goods from supplier on credit on behalf of the firm. Pledge कर सकते हैं, loan ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं. बट लीगल मैटर के लिए पार्टनर्स को अग्री करना पड़ेगा, एक्सप्रेस अथॉरिटी की नीड होगी, मेकिंग 1 एज इनकरेक्ट, 2 as correct, so B is the answer. Submitting dispute to arbitration needs express permission. Receiving goods on credit is allowed under implied authority. Which of the following statement relate to restrictions or extension of implied authority of a partner under Section 20? Partners may contractually restrict a partner's implied authority and it will always bind third parties. Contractually restrict कर सकते हैं हम implied authority को and it will always bind the third party. Third party को अगर notice नहीं है
तो वो थर्ड पार्टी को बाइंड नहीं करेगा। सपोज आप और मैं पार्टनर है, हम दोनों ने मेरे और ये पेन भी पार्टनर है, इसको हमने बोला कि आप ना प्लेज नहीं कर सकते गुड्स को, आप वी डो नॉट ट्रस्ट यू दैट मच दैट यू कैन प्लेज द गुड्स और टेक लोन ऑन आवर बिहाफ, and the third party gives the loan to this person. We didn't inform the third party, but we took away his rights. Can we still be liable for this act? Yes, we will be, क्योंकि हमने थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म नहीं करा था। थर्ड पार्टी ने इसे लोन दे दिया है, although he was not allowed to. The firm will be liable because third party was not informed about the same thing. If a third party has no knowledge of the restriction on the partner's authority, the firm may still be bound. Knowledge ही नहीं था तो liable bound तो होंगे. Any act done within the implied authority of a partner binds the firm unless the partner is again acting against public policy. Implied authority में कोई काम कर रहा है person, वो firm को bind करेगा unless he is acting against public policy. Question number 21. I require an answer from you, please. Give me an answer for the theme. Question number 21 on the screen. देखो, public policy is not the key limit here. It is more about the nature of the act and notice. If the third party is informed about something, then we can restrict the act. Then we will not be liable for the act of the our partner if his authority has been restricted. If we have given the notice, if we have not given the notice, we will be bound by the act of the partner towards the third party. Okay, making 1 and 3 incorrect. 2 is the correct answer only. Okay, lack of knowledge about restriction can lead to firm being bound by the act. Public policy is not the key limit here. It's more about the nature of the act and notice. Restrictions only bind third parties if they are unaware of them. Which of the following statement relate to restriction or extension of implied authority of a partner under section 20? A partner's implied authority can be extended by mutual agreement between all partners. Implied authority को हम बढ़ा सकते हैं agree करके. Secret restrictions on partner's authority will not affect third party unaware of them. अगर आपने चुपचाप से एक restriction लगा दिया कि आप लोन नहीं ले सकते हो और हमने थर्ड पार्टी को नहीं बताया है और थर्ड पार्टी ने इसको लोन दे दिया है, क्या फर्म लाइबल होगी? बिल्कुल 110% फर्म लाइबल होगी. ठीक है, making both the statements as correct. Implied authority can be extended by agreement among partners. Secret restrictions have no impact on outsider and unaware of them. Which of the following statements correctly apply to authority of a partner in an emergency under section 21 of Indian Partnership Act? Emergency situation में क्या authority होगी? A partner can perform any act in an emergency even if it contradicts the partnership deed. कोई भी काम कर सकता है emergency में, चाहे partnership deed के against काम कर रहे हो. The act done by a partner in an emergency must reflect that the person of ordinary prudence would do in his own case. Ordinary prudent person मतलब एक समझदार इंसान यही करेगा जो एक वो उसने करा है इमरजेंसी में, तभी उसके एक्ट को निगलेक्ट किया जाएगा, तभी उसके एक्ट को वैलिड माना जाएगा. A firm is bound by an emergency act of a partner only if it is explicitly authorized by other partner. एक्सप्रेसली ऑथराइज करेंगे तो वो इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे आएगा? अगर देखो सपोज आप और मैं वी आर डीलिंग इन गुड्स लाइक वेजिटेबल्स, राइट? अगर हमने गुड्स को सेल आउट नहीं करा तो वो पेरिश हो जाएंगे, दैट इज दे विल गो बैड. इमरजेंसी आ गई, कोविड की सिचुएशन आ गई है, ठीक है, तो आप और मैं पार्टनर्स थे. आप मेरे को लगा कि गुड्स को अगर नहीं बेचेंगे ना, कोविड आ गया, गुड्स नहीं जाएंगे तो ये पेरिश हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा और हमें कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, हमें लॉसेस हो जाएंगे. ठीक है,
इस सिचुएशन में मैंने गुड्स ऑन अ बल्क ऑर्डर मैंने किसी को बेच दिए एट अ लेसर प्राइस. Am I allowed to do so? Yes, I am, because I am doing this act for the saving of the business. तो इमरजेंसी सिचुएशन में ऑर्डिनरी पर्सन यही करता, पैसे बचाने के लिए वो बेच देता. इमरजेंसी सिचुएशन में मेरे को किसी की भी नीड नहीं है पूछने की, मैं अपने लिए एक्ट कर सकती हूँ, फर्म की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कोई भी एक्ट कर सकती हूँ. मेकिंग थर्ड एज इनकरेक्ट ऑन सेकंड एज करेक्ट. तो थर्ड जहाँ जहाँ पे अगर हम एलिमिनेट करें तो सी ही करेक्ट आंसर बचता है. बट लेट्स सी फर्स्ट सिचुएशन एज वेल. पार्टनर जो इमरजेंसी में काम कर रहा है वो कर सकता है चाहे वो कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है पार्टनरशिप डीड को. हमने लिखा हुआ है आपको अलाउड नहीं है, मेरे को अलाउड नहीं था सेल करना, बट इमरजेंसी सिचुएशन है और मैंने सेल कर दिए सामान को क्योंकि फर्म को लॉस ना हो. क्या ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है. पार्टनरशिप डीड के अगेंस्ट जाना भी अलाउड है क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है. 1 and 2 are correct, 3 is not. That is, C is the correct answer. In emergencies, partners can exceed regular authority to protect the firm, even if such act contradicts ordinary limitation. Section 21 emphasizes the standards of ordinary prudence in similar circumstances. The authority in emergency is independent of approval by other partners. Which of the following statement correctly apply to the authority of partner in an emergency under Section 21 of Indian Partnership Act? Selling perishable goods at a lower price at a different location by a partner may be protected under Section 21. Emergency authority applies only when prior consultation with other partners is not feasible. दूसरे लोगों से आप बात नहीं कर सकते. सपोज मैं सामान लेके जा रही हूँ एक्स लोकेशन पे डिलीवर करने के लिए. On the way, the vehicle the tire of the vehicle gets burst. ठीक है? And now the goods cannot be delivered to the actual location it was supposed to be delivered. इस सिचुएशन में मैं गुड्स को रोड पे भेज देती हूँ सेल लगा के. ठीक है, अब मैं बाकी लोगों को कॉल भी नहीं कर रही क्योंकि नेटवर्क नहीं आ पा रहा है. ऐसे मैं आई एम ऑन सम हिल एरिया. विल माई एक्ट बी अलाउड? Yes, my act will be allowed. Making 1 and 2 both correct, C is the correct answer. This is illustrated in the example of fruit sold in Kolkata by Chennai-based firm. Emergency power assumes action was needed without delay or consultation. Identify the correct implications of Section 26 and 27 firm's liability for acts of partners. A firm is not liable if a partner's wrongful act occurs outside the ordinary course of business. A firm is liable if the partner misuses money received from third party while acting within apparent authority. Firms are not liable for injuries caused due to negligence by any individual partner. फर्म्स लाइबल नहीं होंगे फॉर नेग्लिजेंस की वजह से. अगर इंडिविजुअल पार्टनर ने कोई नेग्लिजेंस करा तो फर्म लाइबल नहीं होगी. वाई? द फर्म विल बी लाइबल. आप फर्म की पार्टनर की गलती है. फर्म नेग्लिजेंट थी, पार्टनर नेग्लिजेंट था. ठीक है, फर्म लाइबल होगी. मेकिंग थर्ड एज इनकरेक्ट. ठीक है, 1 and 2 are correct. Give it a reading. See, that makes C as a correct option. Negligence in course of business makes a firm liable. This is what Section 27A covers. A firm is liable if a partner misuses money received from third party while acting within apparent authority. Section 26 limit liability to act in ordinary course of business. Identify the correct implications of Section 26 and 27 related to firm's liability for acts of partner. Acha, tell me in the comment section, do you find the speed a little, do you find my speed okay or not? मैं थोड़ा स्लो डाउन करूँ, थोड़ा तेज करूँ? Just tell me that. Identify the correct implications of Section 26 and 27
related to firm's liability for act of partners. If a partner misapplies property received by the firm must compensate the third party. अगर पैसे मिले हैं मुझे थर्ड पार्टी से और मैंने उसे पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर दिए हैं, तो क्या मेरे को अभी भी थर्ड पार्टी को गुड्स देने पड़ेंगे? बिल्कुल 100% देने पड़ेंगे. The firm's liability under Section 26 and 27 does not require actual knowledge or consent of other partners. फर्म की लाइबिलिटी में एक्चुअल नॉलेज हो ना हो बाकी लोगों का डजेंट मैटर. ठीक है, देखो मैंने गड़बड़ करी है और आप दोनों को नहीं पता है, तो क्या फर्म लाइबल होगी? स्टिल फर्म लाइबल होगी. मेकिंग बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Misapplication of firm held asset invokes firm's liability under Section 27B. Liability arises even without explicit knowledge or consent if action was within the scope. Which of the following statement correctly reflect the principle of holding out and right to transfer of partner's interest? Partnership by holding out क्या होता है? देखो, आप, मैं और ये पेन पार्टनर्स है. ठीक है, ये पेन पार्टनर है टू द लोकल पीपल. ठीक है, ये पेन नहीं, ये आप मेरा पार्टनर है. ये पर्सन कह रहा है कि मैं भी फर्म का ना पार्टनर हूँ, आप प्लीज इस फर्म को वो दे दो, लोन दे दो. ठीक है, ही इज representing himself to be a partner although he is not. if you and I doesn't default, हमने कोई भी डिफॉल्ट करा, जब जिसने लोन दिया है क्या वो इसको भी केस में फाइल कर सकता है? इसके अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकता है? Yes, because he represented himself as a partner. Although he was not a partner, he can be hauled out for the mistake that you and I did, because he represented himself as a partner. The person who permits himself to be presented as a partner can be held liable under the doctrine of holding out. Legal heirs of a deceased person are liable if the firm continues using the deceased name. A transferee of a person's interest can demand access to firm's name book during the ongoing business. ट्रांसफरी पार्टनर के इंटरेस्ट का डिमांड कर सकता है फर्म्स की बुक्स को देखने का, ऑनगोइंग बिजनेस को. जिसने अपनी राइट्स को ट्रांसफर कर दिया है वो नहीं कर सकता. और हम सिर्फ होल्डिंग आउट का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं. ए इज करेक्ट. लीगल एयर्स अगर हम यूज़ करें, सपोज आप, मैं और ये पार्टनर फ्रेंड्स थे, आई डाई, यू आर स्टिल यूजिंग माई नेम. ठीक है, जस्ट टू रिस्पेक्ट मी, कि आप मेरा नाम नहीं लेना चाहते हो फॉर्म से, जस्ट टू गिव मी अ रिस्पेक्ट एज अ पार्टनर. हमारे अच्छे फ्रेंडशिप थे, हमारे अच्छे टर्म्स थे. एंड विल माई पार्टनर, माई लीगल एयर्स बी स्टिल लाइबल फॉर द सेम? नो, दे विल नॉट बी. मेकिंग 2 as incorrect, making 3 as incorrect. A is the correct answer. Section 28 clearly includes those who knowingly permit such representation. Legal heirs are not liable merely because name is used posthumously. Transferees cannot interfere or demand records during the firm's operation. Which of the following statement reflect the principle of holding out and rights of the transferee of a partner's interest? A transferee is entitled to profits but not to interfere in the firm's management. ट्रांसफरी प्रॉफिट के लिए एंटाइटल होगा बट फर्म की मैनेजमेंट में नहीं आ सकता. ऑन डिसोल्यूशन द ट्रांसफरी हैज अ राइट टू क्लेम शेयर्स इन द असेट ऑफ द फर्म. ट्रांसफरी का राइट होगा शेयर्स में, ट्रांसफरी एज अ राइट, डिसोल्यूशन पे शेयर्स में राइट होगा, डिसोल्यूशन पे राइट होगा. मेकिंग बोथ द स्टेटमेंट एज करेक्ट. ट्रांसफरी ओनली रिसीव्स शेयर इन प्रॉफिट, नॉट मैनेजमेंट राइट्स. On dissolution, the transferee can claim share in the asset on account and accounts. Which of the following statements are correct in the context of dissolution of a firm and dissolution of partnership? फर्म और पार्टनरशिप. फर्म कब डिसॉल्व होती है? जब बिजनेस करना खत्म कर देते हैं. पार्टनरशिप डिसॉल्व कब होती है? जब कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है पार्टनरशिप फर्म को. डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑलवेज रिजल्ट्स इन टर्मिनेशन ऑफ द बिजनेस. legal existence of a partnership entity. Dissolution of partnership always results in dissolution of firm as per section 39 of the Indian Partnership Act. Reconstitution of firm after partner's retirement is treated as dissolution of partnership, not firm. Yes, it is. Yes, it is. Yes, no, it is not.
making 1 and 3 correct. A is the correct answer. Dissolution of partnership does not necessarily means dissolution of firm. Retirement of partner, example, C is going out from ABC firm leads to reconstitution, not complete dissolution. Dissolution of firm terminates the legal entity of the business. Last question from Partnership Act. Which of the following statement are correct in the context of dissolution of firm and dissolution of partnership? Dissolution of partnership implies only a change in internal relations among partners while the firm continues its business. पार्टनरशिप खत्म होने से पार्टनर्स के इंटरनल रिलेशंस चेंज होंगे, फर्म का बिजनेस कंटिन्यू रहेगा. बिल्कुल. As per law, dissolution of the firm refers to end of relationship among all partners winding up the firm. फर्म बंद हो रही है, पार्टनर्स का अपने एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स खत्म हो रहे हैं और फर्म का वाइंडिंग अप हो रहा है. बिल्कुल. Both the statements are correct. C is the correct answer. Dissolution of a partnership involves change in mutual relations, not termination of firm. Dissolution of firm occurs when the relations among the partners ends. We have completed the Partnership Act here. If you have any doubt in Partnership Act, do let me know. Okay, we'll start with Companies Act in 1 minute. If you have any doubt, please let me know in the chat section. Let's start with the Companies Act now. So, Companies Act कब आया था enforce में? It came in force on 1st of April 2014. Replaced Companies Act 1956. Regulates incorporation, management and winding up. Administered by MCA. Latest amendment will happen in 2020 and 2021. We have these types of companies. Private company मतलब जो private individuals own कर रहे हैं, private individuals run कर रहे हैं. Minimum 2 people होने चाहिए private company में. Maximum there can be 200 people. Public company is a company in which there is 51% shares of the government. Minimum we have 7 members in a public company. No maximum limit. Maximum limit कोई नहीं है public company में, कितने भी persons हो सकते हैं. 1 person company इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 एक्ट में, इन विच वी से कि एक सिंगल पर्सन कंपनी बना सकता है एंड विल कॉल देम एज 1 person, विल कॉल इट एज एन 1 person कंपनी. स्मॉल कंपनी मीन्स रिड्यूस कंप्लायंस, छोटी कंपनी है. और सेक्शन 8 कंपनी मीन्स अ नॉन प्रॉफिट कंपनी. डेफिनेशंस आपने आप रीड कर सकते हैं. इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये एक चार्टर होता है कंपनी का, जिसमें आप बताते हो कंपनी क्या है, कंपनी किस तरह, क्या कंपनी का नाम क्या है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी की लायबिलिटी कैसे होगी, कंपनी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैसा रहेगा. एंड इफ यू वायलेट, इफ यू गो बियॉन्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, that act will be ultra virus. That is, act गलत होगा, will not consider the act as allowed by the law and that act will be considered void. ठीक है. बेसिकली कंपनी क्या काम कर रही है वो हम MOA में लिखते हैं. ठीक है.
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, रूल बुक होती है कंपनी के लिए, जो मैनेजमेंट है उसके लिए, कि कैसे कैसे काम करना है, कब मीटिंग होगी, किस तरह की मीटिंग होगी, किस तरीके से डिवाइड चीज़ें, कौन क्या काम करेगा, कैसे शेयर्स को ट्रांसफ़र करा कर जाएगा. Basically, the internal regulation is the article of association, whereas the what is the company is the memorandum of association. ठीक है. एंड ये दोनों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर होता है विद रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. प्रोस्पेक्टस 3 तरीके के होते हैं हमारे पास. दैट इज प्रोस्पेक्टस, एक होता है नॉर्मल प्रोस्पेक्टस जिसमें हम सब कुछ मेंशन करते हैं कि कितने शेयर्स हैं, कितनी क्या शेयर्स का प्राइस है एंड एवरीथिंग. देन इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. जैसे एक मूवी के आने से पहले एक ट्रेलर आता है, वैसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आता है एक्चुअल प्रोस्पेक्टस के आने से पहले, जिसमें हम मेंशन करते हैं कि हम ना प्रोस्पेक्टस लेके आने वाले हैं. वी आर इन्फॉर्मिंग द पब्लिक एट लार्ज कि वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ प्रोस्पेक्टस, बी रेडी दैट देयर इज गोइंग टू बी अ प्रोस्पेक्टस इशू, शेयर इशू होने वाले हमारी कंपनी के. और शेल्फ प्रोस्पेक्टस मतलब एक साथ मल्टीपल इशूज इशू कर देंगे. दैट इज कि हम सपोज मैं एक कंपनी हूँ, मैंने एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर अप्रैल में ही बोल दिया कि मैं 500 शेयर्स इशू होंगे अप्रैल में, 200 शेयर्स इशू होंगे मई में, 600 शेयर्स इशू होंगे नवंबर में, 200 अगेन शेयर्स इशू होंगे जनवरी में. तो बार बार नए शेयर्स इशू करने के लिए बार बार नया प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना चाहूँगी मैं. एक ही बारी मल्टीपल शेयर्स जो इशू होने वाले हैं उसके लिए मैंने पहले ही पब्लिक को इन्फॉर्म कर दिया. दैट इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस. अगर आप प्रोस्पेक्टस में गलत बात लिखते हो, इफ यू डू नॉट गिव अ करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन द प्रोस्पेक्टस, और इफ देयर आर मिस स्टेटमेंट्स इन द प्रोस्पेक्टस, यू हैव टू फेस सम लाइबिलिटीज. जैसे सिविल लाइबिलिटी मतलब लॉसेज हो रहा है अगर किसी को, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए. क्रिमिनल लाइबिलिटी में आपको जेल तक जाना पड़ जा सकता है. एंड रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप किसी को सामने वाली पार्टी ने जस्ट बिकॉज देयर इज अ मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, यू हैव रिटन समथिंग and somebody came and applied for the share but that was wrong, that the other person can even resign the contract. Suppose I come to your company seeing the prospectus but there was a misstatement issue in the prospectus. Here what I can do is I can resign the contract, I can cancel my subscription, I can ask for my money back. शेयर कैपिटल क्या होता है, डायरेक्टर क्या होता है. डायरेक्टर में देखो, मिनिमम डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में 3 होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए और 1% कंपनी में 1 होना चाहिए. वुमेन डायरेक्टर मैंडेटरी फॉर सर्टन कंपनीज. जब कंपनी बहुत लार्जर लेवल पे होती है तो वहाँ पे वुमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है. हर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है जो लिस्टेड कंपनी होती है, जिसमें दैट इज जो भी टोटल डायरेक्टर है उसके 1/3 पर्सन कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए. दैट इज इम्पार्शियल. दे शुड नॉट बी रिलेटेड टू द कंपनी, दे शुड बी इंडिपेंडेंट, कि वो बस अपनी कंपनी की बेनिफिट के लिए काम करें. ठीक है. एंड फॉर इफ यू वांट टू बी अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी यू नीड अ DIN, दैट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर, जो आपको पढ़ना नेसेसरी है. बाकी इसके अलावा आप नोट्स को, सारे नोट्स को रेफर कर सकते हैं जब आप PDF को डाउनलोड करेंगे. आप बिल्कुल गो हेड, इट इज़ अ होमवर्क फॉर यू दैट गो हेड रीड ऑल द नोट्स दैट आर प्रोवाइडेड. ठीक है. लाइबिलिटीज 3 तरह की होती है कंपनी में. एक होता है लिमिटेड बाय शेयर, एक होता है लिमिटेड बाय गारंटी, और एक होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड बाय शेयर मतलब जितने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है मैंने, उसको कहेंगे लिमिटेड बाय शेयर्स, कि मेरे शेयर्स के जितने पैसे हैं उतने तक की ही मेरी लाइबिलिटी है. अगर मैंने 10,000 रुपीज़ के शेयर्स खरीदे हैं तो मेरी 10,000 रुपीज़ तक की लाइबिलिटी है. ठीक है. मतलब अगर यू मस्ट डील इन शेयर मार्केट, कभी ना कभी करा होगा, किसी ना किसी को देखा होगा. ऐसे कहता है पीछे लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट डूबी हुई थी. दीज वर द वर्ड्स देयर वर यूज्ड बाय द पीपल. शेयर मार्केट डूबी हुई मतलब कि आपके पैसे, योर मनी इज in losses, that the amount of shares that you have invested for is now in losses. आपने अप्लाई किया था for 10,000 rupees, now that amount has reduced to maybe 2,000 3,000 rupees. तो कंपनी लॉसेज में, आपकी लाइबिलिटी कितनी है, जितना पैसे आपने दे रखे हैं. सपोज आपने जब कंपनी पैसे मंगाती है ना तो अलॉट टाइम फ्रेम्स में मंगाती है, कि कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ एप्लीकेशन पे, कुछ कॉल्स में. ठीक है. व्हेन यू अप्लाइड फॉर द शेयर्स, यू अप्लाइड फॉर 10,000 रुपीज़ ऑफ शेयर्स, बट आपने पेमेंट करी है सिर्फ 6,000 रुपीज़ की. 4,000 अभी तक कंपनी ने मांगे नहीं है. यू आर लाइबल फॉर द रेस्ट 4,000 एज वेल. आप पूरे 10,000 रुपये के लिए लाइबल होंगे.
ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, आपने गारंटी करी है, मेंबर गारंटी अ सर्टेन अमाउंट टू बी कंट्रीब्यूटेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, कि अगर जब कंपनी डिसॉल्व होएगी ना तो लॉसेस का 10% मैं दूंगा, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम गारंटिंग. The member of the company guarantees कि when the winding up situation comes and we are in losses, we'll pay you at such and such amount. That is company limited by guarantee. ठीक है. Amount of guarantee in the memorandum plus any unpaid share amount. जो भी आपने शेयर्स का पैसे दे रखे हैं, जो नहीं दे रखे वो, और जो दे रखे वो, और जो भी गारंटी में आपने मेंशन करा है मेमोरेंडम में है, उन सबको आपको पेमेंट करनी पड़ेगी. कौन यूज करता है? यूज्ड फॉर एनजीओज एंड सेक्शन 8 कंपनीज. कंपनीज लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कौन सी होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बहुत रेयर सिचुएशन में होती है. कोई भी नहीं चाहता कि उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो इन कंपनी, वेयर एज जो मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी जितनी कंपनी के लॉसेस है वो मेंबर्स खुद अपने पर्सनल एसेट से रिकवर कराएंगे. जब हम कंपनी बना रहे होते हैं तो वी मेक अ कंपनी अ लीगल एंटिटी. हम सेपरेट एंटिटी क्रिएट कर रहे हैं लीगल कंपनी को बना के, कि अगर केस फाइल होगा तो कंपनी के नाम पे होगा, अगर केस फाइल करना होगा तो कंपनी के नाम पे होगा, अगर कोई भी सिचुएशन होती है विल डील इन द नेम ऑफ द कंपनी, द मेंबर्स आर प्रोटेक्टेड. ठीक है. बट द मेंबर्स डू एनी डिफॉल्ट फॉर द सेम, द मेंबर्स आर नॉट प्रोटेक्टेड, मेंबर्स कैन बी सूड एज वेल. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द MCQs. If you have any doubt in the Companies Act, let me know in the chat section. We have a lot of notes regarding the Companies Act in the PDF. You just need to download this PDF, okay, and read these pointers. Which of the following statement accurately reflect the principle related to incorporation and legal identity of a company under Indian company law? The company incorporated under the Companies Act continues to remain valid under the Companies Act 2013 and do not require fresh registration. जो कंपनीज 1956 एक्ट में बनी थी उनको दोबारा 2013 के एक्ट में रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है, यह बोलता है कंपनीज एक्ट. मेकिंग स्टेटमेंट नंबर 1 एज करेक्ट. Once registered, a company enjoys the same constitutional rights as an individual citizen of the India. सिटीजन के पास जो राइट्स हैं सेम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हम कंपनी को देते हैं. देखो, जब हम कंपनी लॉ के नोट्स आप रेफर करोगे उसमें मैंने एक स्पेसिफिकली स्लाइड बनाई हुई है जिसमें मेंशन किया है, एक केस में बताया था कि कंपनी को हमने लीगल एंटिटी तो बना दिया है, कंपनी इज अ लीगल एंटिटी बट द कंपनी इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया. दैट इज, जैसे सपोज सिटीजन ऑफ इंडिया के पास राइट है टू वोट, क्या कंपनी के पास राइट है वोट का? नहीं, कंपनी डज नॉट हैव दैट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया के पास राइट है एजुकेशन का, क्या कंपनी के पास राइट है एजुकेशन का? कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन डज नॉट नीड एजुकेशन. सो सेम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है. The decision of Salomon versus Solomon and Company Limited emphasizes that shareholders and the company are one and the same legal person. देखो, जब Solomon and Solomon case में, let me give you a gist about Solomon and Solomon case. एक पर्सन था मिस्टर सोलोमन, ठीक है. ही मेड अ कंपनी जिसका नाम था सोलोमन वर्सेस सोलोमन. ठीक है. इसने जो शेयर्स, जो कंपनी था उसको अपनी फैमिली को ही उसका मेंबर शेयर होल्डर्स बना दिया. ही गेव शेयर्स टू हिज ओन फैमिली, शेयर्स टू हिज ओन फैमिली मेंबर. ही गॉट द कंपनी रजिस्टर्ड एज वेल. ठीक है. अब कोई डिफॉल्ट हुआ है फॉर अ अमाउंट, सम अमाउंट, डिफॉल्ट अकर्स and someone sues Mr. Solomon plus the company. Here the court held that Mr. Solomon and the company are two different people. The shareholders, देखो ये shareholders है और Mr. Solomon भी shareholders है. They both are different. They are not same thing. They have different individuality. इन्होंने कंपनी बनाई है, कंपनी को लीगल एंटिटी दी है. तो दैट एम्फेसिस शेयरहोल्डर्स एंड द कंपनी आर द सेम लीगल पर्सन्स. नहीं, सोलोमन एंड सोलोमन केस में बोला था दोनों अलग इंडिविजुअल एंटिटीज हैं. द कंपनी
and its members are different from each other. ठीक है, making statement number 1 as correct, others are not. Solomon case established that company is distinct from its shareholders. A company is not a citizen and do not enjoy constitutional rights like voting. Companies registered under earlier acts are still valid under the Companies Act 2013 without re-registration. Question number 2. Which of the following statement accurately reflect the principle related to incorporation and legal identity of a company under Indian Company Act? The term company includes only those registered company under the Companies Act 2013 and excludes any formed under older law. जो सिर्फ 2013 में कंपनी बनी है उसी को हम कंपनी कहेंगे, जो 1956 या उससे पहले की किसी लॉ में बनी है उसको हम कंपनी नहीं कहेंगे. This is what statement number 1 is saying. A company is considered as an artificial legal person that can own property and enter into a contract like 2 lakh citizenship. Citizenship नहीं है बट प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं. बिल्कुल आ सकती है. कंपनी में जो 2013 की कंपनी वो भी आएगी, 1956 की कंपनी वो भी आएगी, उससे पहले का अगर कंपनी लॉ एक्ट था 1912 का था वो भी आएगी. ठीक है, तो मेकिंग 2 as correct, 1 incorrect. B is the correct answer. Company, section 2 subsection 20 includes companies formed under any previous company law. A company is an artificial legal person recognized by law with rights to own property and contract, though not a citizen. Identify the correct statement regarding the structural and operational features of a company as per the Companies Act. The liability of shareholders in a company is limited to the unpaid value of the shares they hold. Liability कितनी होगी? जितनी उनकी unpaid value है shares की. That on the death of all shareholders of a company results in automatic dissolution. Company and shareholders both different. If shareholders die, company does not die. There is no absolute dissolution, complete automatic dissolution. There is a concept of space succession. Okay, there is a concept of perpetual succession, not space succession. It is perpetual succession. Perpetual succession matlab company doesn't die unless it is dissolved by the law. A company can continue to operate indefinitely unless dissolved through formal legal process. Making this as correct, this as correct, this as incorrect, making A as the correct answer. Shareholders, easy करने में. Please give it a reading. Which of the following statement correctly interpret the concept and implications of lifting the corporate veil? Corporate veil हटाना मतलब देखो. We are saying that company and the shareholders are two different people, two different entities. Two different entities. ठीक है? There is a distinction. दो अलग अलग है. Lifting of the corporate veil means इन दोनों के बीच में जो डिस्टिंक्शन है उसको खत्म कर देना. Why? To see what is the actual reason for the problems in the company. जो company ने, if there has been some fraud done, if there has been any mismanagement act done, company के जो losses हो रहे हैं, company के में जो गलत हो रहा है वो कौन कर रहा है उसको check करने के लिए जो differences हटा के हम इन दोनों को same मानेंगे. We'll entertain that the company and the shareholders are one entity and we'll see that who is the actual person doing wrong. ठीक है? The corporate may lift the corporate veil in case of tax evasion or fraudulent conduct by the management. Tax evade हो रहा है तब चेक करेंगे कि किसकी वजह से tax evade हो रहा है.
फ्रॉड हो रहा है तब चेक करेंगे किसकी वजह से फ्रॉड हो रहा है, और इस सिचुएशन में कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है. The lifting of corporate veil implies that directors can never be held personally liable for Companies Act. अगर हम लिफ्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट वेल, मतलब वी आर डीमिंग दैट दे बोथ आर सेम, ठीक है, जस्ट डीम कर रहे हैं, सब मान रहे हैं कि दोनों सही सेम है, और हम डायरेक्टर्स को पर्सनली लाइबल करना चाहते हैं. There is a strict rule under the Companies Act detailing exactly when the corporate veil must be lifted. देखो, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होती है जब कोर्ट को लगता है चेक करना जरूरी है कि कौन फ्रॉड कर रहा है. कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं दे रखा है लॉ के अंदर, कंपनीज लॉ में कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं दे रखा है कि कब कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाएगा. ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? क्वेश्चन नंबर 4. देखो, स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, डायरेक्टर्स को पर्सनल लाइबल कर सकते हैं, कॉर्पोरेट रेल हटती है जब टैक्स इवेशन होता है. तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, A is the correct answer. Fraud or illegal acts are classic grounds for lifting the veil. Directors can be held personally liable if the veil is lifted. There is no fixed statutory rule. It is done case by case. Which of the following statement accurately reflects difference in management, membership, and liability between companies and partnership? Liability management और membership में क्या difference है company और partnership में? A private company must have at least two and can have up to 200 members, whereas partnership can have a maximum of 100 members. ये हम पढ़ के आए हैं इधर पॉइंट, है ना, ये हम पढ़ के आए हैं पॉइंट. A shareholder in a company needs the consent of all existing shareholders to transfer shares, whereas a partner can freely transfer his interest in the firm. कंपनी का जो शेयर होल्डर है उसको पहले सबके पास जाना पड़ेगा पूछने के लिए कि क्या मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ शेयर, क्या मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ शेयर, पर पार्टनर फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है. दिस इज नॉट करेक्ट. अगर शेयर्स को बार बार कंसेंट लेना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को हर पार्टनर से, तो वो कभी शेयर्स खरीदना ही नहीं चाहेगा. शेयर मार्केट में ही होता है ना, पीपल बाय शेयर्स टुडे सेल इट टुमारो, मे बी इन द इवनिंग एज वेल और इन आफ्टर अ फ्यू डेज. टू दे रिक्वायर्ड टू आस्क ऑल द शेयर होल्डर्स कि प्लीज मैं क्या ट्रांसफर कर दूं, और कोई मना कर दे, कंसेंट कर रहे हैं, यहाँ पे कंसेंट बोल रहे हैं. द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी इज जनरली लिमिटेड. कंपनी में जनरली लिमिटेड होता है, बट पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है. बिल्कुल, पार्टनरशिप में तो अनलिमिटेड होती है. तो ये इनकरेक्ट है. 1 and 3 आर करेक्ट. ए इज द करेक्ट आंसर. इट इज अदर वे अराउंड. कंपनी शेयर्स कैन जनरली बी ट्रांसफर्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, बट पार्टनरशिप न्यू पार्टनर रिक्वायर यूनानिमस कंसेंट. एक नया पार्टनर लाने के लिए सबको अग्री करना पड़ेगा कि नया पार्टनर आ रहा है. जस्ट बिकॉज मैंने कह दिया नया पार्टनर आ रहा है डजेंट मीन नया पार्टनर आ जाएगा. Which of the following are correct difference between private and public companies? A private company cannot invite a public to subscribe to its share or debenture. Private है कंपनी, वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती. पब्लिक कंपनी हो तो आप पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो, है ना. A public company needs at least 3 directors while private company needs only 2. Yes, it does. A public company is not allowed to issue prospectus. अगर prospectus नहीं इशू करेगी तो पब्लिक कंपनी को पैसे कैसे मिलेगा रनिंग करने के लिए? तो C is the correct answer. Private companies are prohibited from public invitation. Minimum number of directors are correct. Public company can issue prospectuses. Evaluate the following statement in the context of holding and subsidiary relationships. A holding company must hold more than 50% of the shares in a subsidiary to exercise control. होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में डिफरेंस होता है. होल्डिंग कंपनी मतलब बिग कंपनी दैट इज होल्डिंग द, देखो कभी कंपनी कभी कभी बड़ी कंपनीज छोटी कंपनीज को एक्वायर कर लेती है, ठीक है.
जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो जो एक्वायर कर रही है उसे हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं, जो एक्वायर हो रही है उसे हम सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी कहलाने के लिए कि मैं एक्वायर कर रही हूँ, तो कम से कम 50% शेयर्स उसके मोर देन 50% शेयर्स होने चाहिए। मतलब बेयर मिनिमम में 51 होता है। 51 इज अ बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट कि आपको अपनी हेड दिखाना, दैट यू आर द हेड ऑफ ऑल. Control over the majority compensation of the board is enough to classify a company as subsidiary. Control over the majority compensation कि ज़्यादा compensation board में ज़्यादा compensation मेरा है, इसलिए मैं classify कर सकती हूँ कि a company as subsidiary. A subsidiary is considered as subsidiary of the holding company. A कंपनी है बड़ी कंपनी, ठीक है, इसने एक्वायर करा बी कंपनी को, बी कंपनी को इसने एक्वायर कर लिया, ठीक है, तो बी हुई सब्सिडरी कंपनी, ए होल्डिंग कंपनी. इस ए को भी एक्स ने एक्वायर कर लिया, तो ये इसकी होल्डिंग बन गई और ये इसकी सब्सिडरी बन गई, एक्स की सब्सिडरी. तो होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी इसकी कहीं ना कहीं लिंक्ड अप हुई, एक्स से लिंक्ड अप हुई. सब्सिडरीज ऑफ ओन सब्सिडरी, इसकी हमारी सब्सिडरी की एक और सब्सिडरी है, मानी जाएगी कि ये सब्सिडरी एक्स कंपनी की ही है, माना जाएगा कि B is a subsidiary of X as well, making 3 and 1 correct and A is the correct, oh sorry, or 2 is also correct, so D is the correct answer. Majority shareholding specifies control on the board compensation is an alternate route to control. This cascading effect is explicitly provided. Evaluate the following statements in the context of holding and subsidiary relationships. A company cannot be both a holding and subsidiary company simultaneously. Company बोथ नहीं हो सकती, वो होल्डिंग नहीं हो सकती और सब्सिडरी नहीं हो सकती. इस सिचुएशन में तो ये कंपनी, देखो इस सिचुएशन में ये कंपनी होल्डिंग कंपनी भी है और ये सब्सिडरी कंपनी भी है ना, तो हो सकती है ना. Shareholding alone is not sufficient to establish a holding subsidiary relationship. शेयर होल्डिंग, सिर्फ शेयर होल्डिंग सफिशिएंट नहीं है होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए. It should be both are correct. Both the statements are correct. Neither statements are correct नहीं, both the statements are correct है भाई. Yes. ठीक है. Sorry, it's audible. Voice not audible. Okay. चलिए. देखिए, both the statements are correct. So let's see is the correct answer. It is holding भी हो सकती है, subsidiary भी हो सकती है. Although such cases occur in complex structure, majority shareholding itself is often sufficient. ठीक है. Which of the following statement regarding the memorandum of association are correct? Am I audible, Sneha ji? The objective clause must state both the main objective of the company and any ancillary or incidental objective. जो मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनी का प्लस जो इससे रिलेटेड अब ऑब्जेक्टिव है, दोनों मेंशन करना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्लॉज में. जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको पढ़ा रही थी, उसमें बात मेंशन थी कि वी हैव टू मेंशन बोथ द ऑब्जेक्ट्स. द नेम क्लॉज मस्ट मेंशन द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. पूरा एड्रेस लिखना जरूरी नहीं होता है नेम क्लॉज में. इट इज किस स्टेट में है वो कंपनी, दैट इज सफिशिएंट. The company registered under Section 8 can be exempted from using the word limited
और प्राइवेट लिमिटेड इन इट्स नेम। सेक्शन 8 कंपनी कौन होती है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उसको हम लिमिटेड और नॉन प्राइवेट लिमिटेड लिखने के लिए उसको नीड नहीं होती, ठीक है। सो थर्ड इज इनकरेक्ट, सॉरी थर्ड इज करेक्ट, नीड एग्जेम्प्टेड है ना, थर्ड इज करेक्ट। सेकंड में नेम क्लॉज को कंप्लीट एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं होती, तो सेकंड इज इनकरेक्ट एंड फर्स्ट इज करेक्ट, तो 1 and 3 are correct, A is the correct answer. The object clause includes both main, incidental or ancillary object. Both only the name of the state where the registered office is situated is required, not the full address. Important point. Section 8 companies are permitted by license to omit limited or private limited. Okay. Which of the following statement regarding memorandum of association are correct? The liability clause in the memorandum of association determines the personal legal responsibilities of directors in the event of company's insolvency. Liability clause में mention करेगा personal in the memorandum will determine कि personal legal responsibility कितनी है डायरेक्टर की जब कंपनी insolvent हो जाएगी। लाइबिलिटी क्लॉज में हम मेंशन करेंगे कि किस तरीके से कंपनी लाइबल है, whether it is liable by the shares, amount of shares, by guarantee or do they have unlimited liability, ठीक है। बट लाइबिलिटी क्लॉज डिटरमाइन करेगा डायरेक्टर्स के बारे में या शेयर होल्डर्स के बारे में, दैट इज द क्वेश्चन। द कैपिटल clause must include the number and nominal value of shares into which the capital shares authorized shares capital is divided. कैपिटल क्लॉज में बताएंगे कि क्या कितने शेयर्स इश्योर है और क्या वैल्यू पे कैपिटल डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल कैपिटल क्लॉज यही बताएगा, ठीक है। जब हम लाइबिलिटी क्लॉज के बारे में बात करते हैं वी टॉक अबाउट द शेयर होल्डर्स, ठीक है। द लाइबिलिटी क्लॉज रेफर्स टू मेंबर्स लाइबिलिटी, not director's liability in insolvency. The capital clause states the authorized share capital and how it is divided. Which of the following statement best describes the nature and structure of Article of Association under Companies Act? Article of Association primarily defines the external scope of business and fundamental purpose of the company. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रेगुलेशंस के बारे में बात करता है, एक्सटर्नल स्कोप्स के बारे में नहीं बात करता। Provisions of the entrenchment can only be introduced at the time of incorporation of the company. Entrenchment के provisions via amendment भी डाले जा सकते हैं. You will read about this in the notes that are in the PDF. ठीक है? Entrenchment provisions require unanimous consent of all members in a private company for amendment. यूनानिमस कंसेंट चाहिए होती है प्राइवेट कंपनी में कुछ भी अमेंडमेंट लाने के लिए, ठीक है। दिस इज करेक्ट, देखिए दिस इज अ पॉइंट दैट यू नीड टू लर्न, दैट थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अ प्राइवेट कंपनी इंट्रेंचमेंट प्रोविजंस रिक्वायर एग्रीमेंट बाय ऑल मेंबर्स, सो यू विल हैव टू लर्न दिस पॉइंट। Entrenchment provisions can be incorporated by amendment. MOA में होता है external process. Article of Association governs internal management. Which of the following statement correctly represent the legal distinction and enforceability of MOA and AOA? MOA binds company and its members as if it were a signed contract. AOA can override MOA in special circumstances. MOA over AOA always. MOA से बड़ा AOA कभी नहीं हो सकता. Act done beyond the scope of MOA are ultra virus and cannot be ratified even by the shareholders. MOA के अगेंस्ट जाओगे, the act will be declared ultra virus, चाहे shareholders माने ना माने irrelevant है, ठीक है। So 1 is correct, 3 is correct, 2 is not correct, A is the correct answer. Section 10 states MOA and AOA binds the company and members as if they were signed by them. Articles cannot override MOA. MOA is dominant. Any act beyond MOA is ultra virus, that is void and cannot be ratified. Which of the following statement does not correctly relate to doctrine of ultra virus in the company law? There are three doctrines.
ultra-virus. Another one is this indoor management. No, there are three doctrines: ultra-virus, and second one is, give me a second. अल्ट्रा वायरस है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, एंड इंडोर मैनेजमेंट है. ठीक है, तीनों लाइन बाय लाइन आती है. अल्ट्रा वायरस क्या होता है कि इफ यू आर डूइंग एन एक्ट अगेंस्ट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, that act is not allowed. That act is void ab initio. That is, suppose मेरी कंपनी का काम है to work to make cycle tires. ठीक है, if I do a contract with this company, this is a company now, if this we do a contract with this company to give them tires for the trucks, this is not allowed. That is not allowed. ठीक है, मैं अपनी कंपनी के ऑब्जेक्ट से डिफर नहीं कर सकती. आई कैन नॉट गो अगेंस्ट माई MOA. इफ आई डू गो अगेंस्ट माई MOA, दैट एक्ट विल बी void ab initio. Then comes the doctrine of constructive notice. It is deemed that जो भी कंपनी के साथ डील कर रहा है उस पर्सन ने MOA एंड AOA दोनों रीड करा हुआ है. कंस्ट्रक्टिव नोटिस की डॉक्ट्राइन कहती है दैट इट इज डीम्ड दैट whoever is dealing with the company has read and understood the memorandum of association and article of association, and they will know what is right and not, and they will know कि क्या किसका काम है, क्या कंपनी का ड्यूटी है, what is the company dealing in, what is the liability of the company. They should know everything because MOA and AOA are registered with the registrar of the company, and MOA and AOA are public documents because they are registered with the registrar of the company, and the office of registrar of the company is a public office. ठीक है, then the third this doctrine comes, that is indoor management. इसमें जो हम लोगों ने प्रोटेक्शन वो कंपनीज को वो दे दिया ना, फ्री गो. ठीक है, फ्री राइड दे दिया, नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी में एक रूल है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग कि जो भी अगर लोन चाहिए कंपनी को तो मिस्टर एक्स लोन ले सकते हैं. ठीक है, बट फॉर दैट मिस्टर एक्स हु इज द डायरेक्टर रिक्वायर्स दिस वोट बाय स्पेशल मेजोरिटी. ठीक है, इस पेन ने क्रेडिटर था, इसने लोन दे दिया मिस्टर एक्स को, नोइंग इट कि मिस्टर एक्स के पास अथॉरिटी है लोन लेने की. मिस्टर एक्स ने मिस्टर एक्स को लोन दे दिया गया है बाय दिस क्रेडिटर. अब और मिस्टर एक्स ने जब लोन लिया है तब स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू लोन नहीं लिया था. ये इंटरनल प्रोसेस के बारे में इस क्रेडिटर को कैसे पता हो सकता है? Here we will protect the rights of this creditor and he will be given the amount back anyhow. ठीक है, this is what the three doctrines say. Let's read the questions now. Which of the following statement are correct, not does not correctly relate to doctrine of ultra-virus? A contract that is ultra-virus, the company is void. A contract that is ultra-virus, the company is void from the beginning and cannot be validated later by ratification. A company can be held liable under an ultra-virus contract if it has unknowingly derived some benefits from the transaction. Unknowingly derive करे है transaction. So ये doctrines का ना मैंने आपको सिर्फ just दिया है. आपको full fledgedly doctrines को समझने के लिए PDF को again refer करना पड़ेगा, क्योंकि just 2 lines की doctrines नहीं है. These doctrines are quite big. ठीक है, especially the doctrine of ultra-virus. A company can be held liable under ultra-virus contract if they unknowingly derived if it has unknowingly derived some benefits from the transaction. The ultra-virus borrowing is entirely unenforceable even if the borrower fund were used for purchase of traceable company's asset. The actor entering into an ultra-virus transaction may be personally liable if the outsider has no knowledge of the lack of authority.
What is not correct? What is not correct? देखो, डायरेक्टर पर्सनली लायबल नहीं होंगे, ठीक है, तो दिस इज नॉट करेक्ट. फोर्थ इज नॉट करेक्ट. एक्ट अल्ट्रा वायरस होगा, void from the beginning होगा, कैन नॉट बी वैलिडेटेड लेटर बाय ratification. इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी अलाउड. टायर्स के साथ डील करना अलाउड नहीं है, इज नॉट अलाउड, ठीक है. A company can be held liable under the uh, A company can be held liable under the ultra-virus contract if it unknowingly derived some benefits from the transaction. If it derives any benefits from the transaction, it cannot be held liable. Okay? Even if the benefits are derived, the contract itself remains void. The ultra-virus transactions are void ab initio. Okay? And directors can be held personally liable if the outsider was unaware about the transaction. See, जनरल रूल डायरेक्टर्स लाइबल नहीं होते हैं, बट डायरेक्टर को आप पर्सनली लाइबल कर सकते हो अगर उसने जान के फ्रॉड करा है. किसी के फ्रॉड को आप डायरेक्टली अलाउ नहीं कर सकते हो. द लेंडर मे ट्रेस एसेट्स क्रिएटिंग अल्ट्रा वायरस बोरोइंग ट्रेसिंग ऑफ डॉक्ट्रिन्स. ठीक है, लेंडर को एसेट, इफ द एसेट्स आर ट्रेसेबल वी कैन डू दैट. ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर. देखो सी कैसे करेक्ट आंसर है, वी हैव टू टेल क्या नॉट करेक्ट है. ठीक है, दीज आर नॉट करेक्ट. बेनिफिट्स डिराइव हुए हैं तो वॉइड होगा. इफ द ट्रेसेस आर, इफ द एसेट्स आर ट्रेसेबल, इट इज वॉइड. ठीक है, which of the following statement are correct regarding the effects and remedies associated with ultra virus transactions? Give me a second please. Criminal actions may be initiated against directors if deliberately misapplication of the funds in an ultra virus act. क्रिमिनल एक्शन लिया जा सकता है एक पर्सन के अगेंस्ट जिसे जान के धोखा देने की कोशिश करी है. इफ यू डू फ्रॉड deliberately you will be criminally prosecuted. ठीक है, if a third party is unaware of the act being ultra virus, they can still claim protection under the doctrine of indoor management. indoor management पे तो नहीं कर सकते. So first is the correct answer. Knowing of irregularity disqualifies the third party from invoking the doctrine of indoor management. Fraud or deliberate misapplication makes the director criminally liable. Which of the following statement best reflects the implications of doctrine of constructive notice in company law? We deem that everybody has read the MOA and AOA. All persons dealing with the company are presumed to have read and understood the MOA and AOA. The doctrine allows the person to sue the company if the internal procedure were not followed but were unknown to them. ठीक है, डॉक्टर अलाउ कर सकते हैं सू करने का कंपनी को द इंटरनल प्रोसेस वर नॉट फॉलोड बाय देम. Is this what comes under the doctrine of this constructive notice? No, it does not. Constructive notice is a legal presumption even if the parties never actually read the company's document. Legal presumption है. 1 and 3 are correct. Constructive notice works against, not in favor of the outsiders. Actual reading is not required. Legal presumption applies. It is a legal presumption that the person has read and understood the document. Which of the following statement best reflects the implications of the doctrine of constructive notice in the company law? A doctrine is meant to, constructive notice again पढ़ रहे हैं, presumption है हमारा यहाँ पे. The doctrine is meant to protect outsiders entering into contract with the company in good faith. Outsiders को protect नहीं करता है. The company does not protect the outsider. The doctrine does not protect the outsider. ठीक है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस में आउटसाइडर को हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं. द डॉक्ट्राइन assumes awareness. Just because good faith लिखा है doesn't make the statement correct. The doctrine assumes awareness of not just documents but also the powers of limitation of the company. Doctrine में assume करता है कि आपने MOA AOA पढ़ रखा है and आपको पता है कि कंपनी की क्या पावर्स है, उस पर्सन की क्या पावर्स है और क्या लिमिटेशंस है उस पर्सन की. क्यों? क्योंकि आपने रीड कर रखा है. यही तो assume कर रहे हैं हम कि आपने रीड कर रखा है. मेकिंग
2 as correct, first as not. B is the correct answer. This is the function of doctrine of indoor management. The person is deemed to know officer's power as per public documents. Which of the following statement correctly pertains to the mode by which an individual may become a member of a company? A person becomes a member automatically upon death of relatives who held shares without any registration required. Person becomes member. एक person member कब बन जाता है? Again notes को refer करना पड़ेगा आपको. Automatically upon the death of the person who has held the share without registration required. रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट के बिना आप ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हैं, ऐसा नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. The subscriber of memorandum is deemed to be a member even without applying for shares or receiving allotment. सब्सक्राइबर को हम मानेंगे मेंबर, मेमोरेंडम जो मेंबर मानेंगे चाहे उसने शेयर्स लिए हैं नहीं लिए. यस, दिस इज द रूल. सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. जॉइंट मेंबरशिप ट्रीट्स ईच जॉइंट मेंबर सेपरेटली फॉर वोटिंग और इंडिविडेंट राइट. जब जॉइंट मेंबर्स, हम दो जनों ने मिलके शेयर्स को लिया है ना, ठीक है, मेंबरशिप ली है, तो हम मानेंगे वो एक ही इंडिविजुअल पर्सन एंटिटी है, दो अलग अलग नहीं है. मेकिंग थर्ड एज इनकरेक्ट. 2 C is the correct answer. Safe treatment statement number 2 correct है. As per law, subscription to the MOA deems membership. Joint members are treated as single members. Only the first named is treated for communication. Legal heirs or joint holders must register to become members. Which of the following statement correctly pertain to the modes by which an individual may become a member of a company? A person who allows his name to remain in the register of the member without agreement may be stopped from denying membership. आपका नाम रजिस्टर में है मेंबरशिप के, आपको आप डिनाई नहीं कर सकते मेंबरशिप. आप यू कैन नॉट नाउ डिनाई द मेंबरशिप बिकॉज यू हैव द नेम इन द रजिस्टर. दिस इज व्हाट द रूल सेज. मेकिंग A as first is correct. A person who receives allotment of shares but whose name is not entered in the register. देखो, member बनने के लिए, to become a member of a company, you need that your name is registered in the register of members. If your name is not registered, you will not be treated as a member of the company. ठीक है? So a person who receives allotment of the share but whose name is not entered in the register of the members cannot be treated as member. Yes, he cannot be. Both the statements are correct. Unless the name is registered, membership is not recognized. This refers to membership by acquiescence. A person cannot later deny membership. Which of the following statement correctly identify who may become a valid member of a company under companies law? A registered society under the Societies Registration Act can hold shares in its own name. रजिस्टर्ड सोसाइटी जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है वो शेयर्स अपने नेम में ले सकती है. क्यों? बिकॉज वो एक लीगल एंटिटी है, वो ले सकती है. अ पार्टनरशिप फर्म कैन बिकम अ मेंबर ऑफ its own name provided it is registered. पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन सकती है अपने नेम में प्रोवाइडेड इट इज रजिस्टर्ड. नहीं, पार्टनरशिप फर्म कैन नेवर बी अ मेंबर. अब कंपनी कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी ओनली इफ द एमओए परमिट्स. देख एमओए जो कह रहा है हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा. तो अगर एमओए कहता है कि आप दूसरी कंपनी का मेंबर बन सकते हो तो आप बन सकते हो. मेकिंग 1 and 3 करेक्ट. देखो, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ लीगल पर्सन एंड कैन नॉट होल्ड शेयर्स इन इट्स ओन नेम. अ कंपनी कैन बी अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी विद ऑथराइजेशन इन इट्स एमओए. रजिस्टर्ड सोसाइटी आर अलाउड टू बी मेंबर्स.
विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस डज मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी सीज, कब मेंबरशिप खत्म हो जाएगी? सो ऑन फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स, ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी, कंपनी ने आपसे आपके शेयर्स वापस ले लिए तो आप अब मेंबर नहीं रहोगे, बिल्कुल। ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आपने अपने शेयर्स को रिडीम कर लिया है, तब भी आप पार्टनर मेंबर नहीं रहेंगे। ऑन द डेथ ऑफ अ मेंबर इवन बिफोर लीगल एयर रजिस्टर देमसेल्फ, जब आपकी डेथ हो जाती है ना, मतलब इफ मेंबर डाइज, सो लीगल एयर के पास ना एक टाइम होता है कि स्पेसिफिक ड्यूरेशन दिया जाता है कि आप अपने आप को रजिस्टर करा दो कि नहीं। जब तक वो रजिस्टर नहीं कराते अपने आप को, तब तक माना जाएगा कि दैट डेड पर्सन इज स्टिल अ मेंबर। वो टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा और लीगल एयर्स ने अब अपने आप को स्टिल रजिस्टर नहीं कराया, तब मेंबरशिप सीज हो जाएगी। तो मेकिंग 1 and 2 करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is true regarding the register of members under the Companies Act 2013? A company is not allowed to maintain part of the register outside India. Why? It is allowed. अगर आपका काम outside India है तो you can still maintain a register outside India. A company can close its register of members for a maximum of 30 days in a year. No, the time frame is different. A company fails to maintain a register of members, it may face a penalty up to 3 lakh rupees. It can. ठीक है, ये आप लर्न करेंगे पॉइंट। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। A company is penalized for 3 lakhs, officer may face up to 50,000 rupees. कंपनी क्रॉस कर सकते हैं 45 डेज की, फॉर बट नॉट मोर देन 30 days at a time. Again, a point to learn. Companies may keep a foreign register subject to conditions. Which of the following statement accurately describes the rights and liabilities of members in various companies? A member in a company limited by guarantee is liable only when the company is getting wound up. मेंबरशिप हमने गारंटी में पढ़ा था कि एक पर्सन गारंटी कर रहा है कि जब कंपनी बंद होगी ना तब मैं इतना परसेंटेज ऑफ अमाउंट दूंगा। तो गारंटी सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई करती है जब वाइंडिंग अप प्रोसेस स्टार्ट होता है या वाइंडिंग अप हो रही होती है। In a company limited by share, a member's liability and once the face value of the share is fully paid. लिमिटेड बाय शेयर्स में जैसे ही शेयर्स का अमाउंट पे हो जाएगा वैसे ही आपकी लाइबिलिटी खत्म होगी, क्योंकि आपका जितना शेयर्स में अमाउंट देना था उतना ही आपकी ड्यूटी है टुवर्ड्स द कंपनी। Statutory rights of members can be modified by the company's article of association. Statutory means rights means law rights via law. लॉ ने जो राइट्स दिए है वो आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से चेंज कर सकते हो। नहीं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से लॉ के थ्रू दी हुई राइट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। लॉ ने आपको राइट्स दिए ना, द पार्लियामेंट हैज गिवन यू द राइट्स, ठीक है, द एक्ट हैज गिवन यू द राइट्स। राइट्स बाय द लॉ cannot be taken away just because you have prepared some article of association, making third incorrect, 1 and 2 correct. C is the correct answer. Guarantee liability arises only on winding up. No further liabilities after full payment. Statutory rights cannot be altered by article or memorandum of association. Which of the following statement regarding types of prospectus are correct? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, देखो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ट्रेलर प्रोस्पेक्टस होता है। A red herring prospectus must be filed with the registrar at least 7 days before the opening of subscription list. It is not 7 days. It is not 7 days. ठीक है? It is 3 days. ठीक है? A shelf prospectus allows a company to issue securities in multiple tranches without filing fresh prospectus. मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी ने prospectus रिलीज करा इन द मंथ ऑफ अप्रैल और उसने बोला कि मैं अप्रैल में इतने शेयर्स इशू करूंगा, नवंबर में इतने करूंगा, दिसंबर में इतने करूंगा। एवरी मंथ दे हैव गिवन सेवरल इश्यूज, ठीक है, एंड बार बार न्यू प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं करते, तब हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस कहते हैं।
Red herring prospectus contains full details of the security including the price and quality offered. क्या कभी भी ट्रेलर में सारी पिक्चर दिखा दी जाती है? नहीं. तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज सॉर्ट ऑफ अ ट्रेलर. सिर्फ ऊपर ऊपर से इंफॉर्मेशन आती है और लिटिल बिट इंफॉर्मेशन इज गिवन. ठीक है, जस्ट टू टेम्प्ट द पब्लिक और जस्ट टू इन्फॉर्म द पब्लिक दैट दिस इज गोइंग टू गेट, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ठीक है, फुल डिटेल्स आर गिवन इन द ओरिजिनल, द रियल प्रोस्पेक्टस. मेकिंग 1 and 3 incorrect. 2 is the only correct option. A is the correct answer. Red herring prospectus does not include complete particulars of price or quality. A red herring prospectus must be filed at least 3 days prior to the opening of the subscription list, not 7. ये ना point आप learn करेंगे please. Which of the following statement regarding types of prospectus are correct? A final prospectus must include all omitted detail from the red herring prospectus such as total capital raised and closing price. फाइनल प्रोस्पेक्टस में आप सब कुछ लिखेंगे, जो भी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखा था वो सब आप फाइनल प्रोस्पेक्टस में लिखेंगे. A company is not required to issue prospectus even when it invites underwriters or subscribers to its securities. Underwriters और subscribers क्या होता है? Again notes को रेफर करना पड़ेगा. But जब आप sorry, जब आप अंडरराइटर्स को और सब्सक्राइबर्स को शेयर्स इशू कर रहे होते हो तब आपको प्रोस्पेक्टस देने की कोई नीड नहीं होती, क्योंकि आप अपने ही लोगों को पैसे वो प्रोस्पेक्टस दे रहे हो, इशू कर रहे हो शेयर्स. मेकिंग बोथ द स्टेटमेंट्स एज करेक्ट. सी इज द करेक्ट आंसर. प्रोस्पेक्टस इज नॉट मैंडेटरी इफ सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड ओनली टू अंडरराइटर्स. Which of the following statement correctly describes the liability and remedies related to misstatement to a prospectus? Directors cannot be held liable for criminal punishment if they believed the misleading statement was immaterial. डायरेक्टर्स को लगता है कि स्टेटमेंट इमटेरियल था तो उनको जेल नहीं भेजा जा सकता, बिल्कुल भी नहीं भेजा जा सकता. Every person responsible for issuing misleading prospectus is automatically liable under 447. ऑटोमेटिक लाइबिलिटी हो जाती है क्या? नहीं, ऑटोमेटिक लाइबिलिटी नहीं होती है. इफ़ यू प्रूव दैट यू डिडंट नो या फिर आप जेन्युइन थे, आपकी ऑटोमेटिक लाइबिलिटी नहीं होती है. 1 इज करेक्ट. सेक्शन 447 इज नॉट ऑटोमेटिक. डिफेंस सच एज लैक ऑफ नॉलेज और रीजनेबल बिलीव्स आर वैलिड. Director can avoid liability if he proves statement was immaterial or he has reason to believe of it to be true. Which of the following statement about the minimum members and types of directors required in different companies under section 149 of the Companies Act are correct? Every listed public company must have at least one third of its total number of directors as independent director. We have just studied about this before the class started, before this topic of Companies Act started, कि at least one third persons total directors के independent director होने चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए. A company can appoint more than 15 directors by passing a special resolution. Via special resolution, you can increase the number of minimum directors. ठीक है. All companies must have at least one woman director irrespective of the size or class. इरिस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, किसी किसी सिचुएशंस में अलाउड होता है कि वुमेन डायरेक्टर होने ज़रूरी है, डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस के ऊपर. एटलीस्ट वन डायरेक्टर मस्ट हैव स्टेड इन इंडिया फॉर मिनिमम ऑफ 182 days. एक डायरेक्टर इंडियन का सिटीजन होना चाहिए इन द प्रीवियस कैलेंडर ईयर. येस, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. सो 1 is correct, 2 is correct, 4 is correct, 3rd is not, making C as the correct answer. Requirement of women director applies only to prescribed classes of the companies, not universally. Though the normal maximum number of directors is 15, a company may appoint more by passing special resolution. Every listed public company is required to have at least one third of the independent character और इंडियन का रेजिडेंट होना चाहिए. 182 days का रूल है. Which of the following scenario would qualify a person from being appointed as an independent director under section 149 subsection 6? A person was a partner in a law firm that turned 15% of the turnover from the company last year. देखो, अब ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे. ठीक है,
अगर एक पार्टनर था फर्म में, पर्सन पार्टनर था लॉ फर्म में, एंड द कंपनी हैड 15% ऑफ द टर्नओवर ऑन द लास्ट ईयर फ्रॉम द कंपनी, मेरी कंपनी से 15% का टर्नओवर उस लॉ फर्म को गया है, क्या वो पर्सन डिस्क्वालीफाई होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने से? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रूल है कि आपको इम्पार्शियल होना चाहिए, आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यू कैन नॉट हैव एनी लिंक अप विद द कंपनी, ठीक है, एनी लिंक अप विद द कंपनी। एक पर्सन वो विल बी डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। अब देखो फॉलोइंग सिनेरियो में कौन डिस्क्वालीफाई होगा, तो अ पर्सन हैविंग दिस मच अमाउंट ऑफ परसेंटेज फ्रॉम द टर्नओवर विल बी disqualified, ठीक है। A person's relative holds 60 lakhs worth of share in the holding company, अगर आपका रिलेटिव शेयर होल्ड कर रहा है मेरी कंपनी में, वो भी इतने मेजर अमाउंट का, आपको डायरेक्टर नहीं रखा जा सकता, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। सो बोथ द स्टेटमेंट्स डिस्क्वालीफाइज द पर्सन, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। A relative holding a security exceeding a limit of 50 lakh rupees or 2% of the paid up capital disqualifies the person being a partner। देखो यहाँ से अब आप लर्न करेंगे, ये 100% पॉइंटर्स हैं जो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, ऐसे आपको लर्न, ऐसे ही आप जस्ट ऑन द लॉजिक यू कैन नॉट गिव द आंसर। Being a partner in a consulting legal firm with a transaction of more than 10% of the gross turnover with a company disqualifies. Which of the following statement about retirement by rotation and reappointment under section 152 are true? Independent directors are included in the total number of directors for the purpose of calculating retirement by rotation. Independent directors are not included, ठीक है। इंडिपेंडेंट हमेशा अलग होते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। 1/3 of the directors liable for retirement by rotation must retire by at every AGM, that is annual general meeting, or at least number closest to 1/3. This is correct. If a retiring director vacancy is not filled and the meeting is adjourned, he is automatically reappointed unless specific conditions are met. This is again true. 2 and 3 are correct. B is the correct answer. Independent directors are excluded from the calculations. आप इसे रीड कर सकते हैं प्लीज। Which of the following statement about retirement by rotation and reappointment under section 152 are true? The longest serving director since last appointed is generally the one to retire by rotation. जो सबसे पुराना है वो सबसे पहले जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट को वाला रूल आएगा, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग विल रिटायर फर्स्ट। Article of Association cannot alter the rule of retirement by rotation for public companies. It can alter. कब कौन रिटायर होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बता सकता है, ठीक है। 1 is correct, 2 is not, A is the correct answer. Article can override the default rule of retirement by rotation subject to compliance. Longest serving director public companies. फर्स्ट कम फर्स्ट को, ठीक है। अच्छा ये वाला पॉइंट, longest serving director since the last appointment retires first, determined by lot if multiple in the same on the same date. Which of the following statement regarding the appointment and consent of directors are correct? A motion for appointing multiple director in a single resolution is valid if no objection is raised during the meeting. मल्टीपल डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं एक ही रेजोल्यूशन में इफ कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया गया है। A person proposed as a director in a public company must submit written consent except when retiring by rotation. A person named as director in the article of association at the time of registration must still file consent with the registrar. If you want to be a director ना, आपको हमेशा रजिस्ट्रार के पास कंसेंट फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, आपको कंसेंट फाइल करना पड़ेगा। बट अगर आपका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ है, तो आपका नाम पब्लिक डॉक्यूमेंट में दे रखा है, तो आपको कंसेंट फॉर्म फाइल करने की कोई नीड नहीं है। मेकिंग थर्ड एज इनकरेक्ट, अदर टू आर करेक्ट एंड सी इज द करेक्ट आंसर।
Director named in the article is incorporated are exempted from filing consent. Consent is mandatory unless the person is retiring or have already filed the candidature notice. Single resolution for multiple director is allowed only if no vote is cast against it. Which of the following statements are correct regarding director disqualification and vacation of office under the Companies Act? A director is disqualified if he has not paid call money और शेयर हेल्ड बाय हिम. डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर उसने कॉल मनी नहीं दे रखा है. बिल्कुल, आप खुद ही डिफॉल्ट कर रहे हो शेयर्स में तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. A director vacates office in absence if absent from all board meeting for 6 months continuously. It is not 6 months. ठीक है, it is not 6 months. The director vacates office if convicted और सेंटेंस फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स. 6 महीने के लिए जेल जा रहे हैं इवन इफ द अपील इज पेंडिंग. अगर आप जेल में जा रहे हो, आपको जेल भेजा जा रहा है, आपका डायरेक्टरशिप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी. मेकिंग 1 and 3 करेक्ट, 2 इज नॉट. एब्सेंस मस्ट बी फॉर 12 months, नॉट 6. ठीक है. ऑफिस इज वेकेटेड with regardless whether an appeal is filed. Non-payment of call money can disqualify a person from being appointed as director. Which of the following statements are correct regarding director's disqualification and vacation of office under the Companies Act 2013? A person becomes disqualified if convicted of an offence involving moral turpitude. अगर आपकी मॉरल्स पे क्वेश्चन कर दिया गया है और आप ऑफेंस किसी भी ऑफेंस के लिए मतलब यू हैव बीन कन्विक्टेड, नाउ यू कैन नॉट बी अ पार्टनर एनी डायरेक्टर एनी मोर. ठीक है. A company can remove a director before his term ends by passing an ordinary resolution. क्या एक कंपनी डायरेक्टर को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से हटा सकती है? बिल्कुल हटा सकती है. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अ डायरेक्टर कैन बी रिमूव्ड अर्ली थ्रू ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. मॉरल टर्पिट्यूड कन्विक्शन इज वैलिड ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन. Last question for the day. Which of the following statement about loan to directors and related party transaction are true? अ लोन गिवन, देखो जनरल रूल, आप अपनी डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते हैं. अ लोन गिवन बाय अ कंपनी टू इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी इज ऑलवेज परमिटेड विदाउट रिस्ट्रिक्शन. अपनी ही सब्सिडरी को लोन देना क्या अलाउड होगा? नहीं, इट इज नॉट अलाउड विदाउट रिस्ट्रिक्शन. Any contract with a private company is in which a director is member requires board approval. अगर आप अपनी ही कंपनी के डायरेक्टर, मतलब सपोज मैं एक डायरेक्टर हूँ आपकी कंपनी का एंड मैं डायरेक्टर हूँ किसी और कंपनी की भी, ठीक है, वो मेरी प्राइवेट कंपनी है, क्या आप वहां से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं, बिकॉज अनड्यू एडवांटेज मिलेगा उस डायरेक्टर को. ठीक है. लोन टू डायरेक्टर्स आर अलाउड इफ सिक्योर्ड अगेंस्ट द कंपनीज फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट के अगेंस्ट देखो लोन अलाउड ही नहीं है. ठीक है. 1 भी इनकरेक्ट है, 3 भी इनकरेक्ट है, 2 इज द करेक्ट आंसर. Act prohibits loan to director even if secured unless specific exemption applies. Board approval is necessary for contract with related parties including private companies where director is a member. Though loan to wholly owned subsidiaries generally permitted, they still meet conditions under section 186. That is it from my side. I have completed 3 laws today. We'll meet tomorrow again with different laws. We'll try to complete module D tomorrow. Till then, if you have any doubt, please write that in the chat section. आप जब भी आपको कोई भी डाउट होगा, go ahead, write that in the chat section. I'll see the doubts and I'll reply to it. And आपको ये PDF हमारे ऐप पे मिल जाएगी, JAIIB CAIIB प्रेप ऑफिशियल के ऐप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी. आपको बस ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ जाके आपको PDF डाउनलोड करनी है. दैट इज इट. यू विल गेट द PDFs ऑफ ऑल द यूट्यूब लेक्चर्स देयर. ठीक है. टिल देन, बाय बाय, थैंक यू. विल मीट सून. विल मीट टुमारो at 9 p.m.